Welcome back to Chasing the Target. What a game we had on shore. An outstanding match. India versus New Zealand. India winning by 12 runs. मैच हैदराबाद में था तो थोड़ा स्पेशल तो रहने वाला था एंड व्हाट अ इनिंग्स बाय ब्रेसवेल आई मीन फर्स्ट कंग्रेचुलेशन टू शुभमन गिल दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग डबल 100 ब्रिलियंट वी विल टॉक अबाउट हिज इनिंग्स but Bracewell is the one who made the game out of this. Him and Santner 131 for sixth in New Zealand एक stage पे और 100 plus का जो partnership था. And even in the end, जब after Santner got out, it looked like India will easily win. In the last over itself, he hit that six Bracewell and he kept New Zealand in the game under pressure. अलग ही ball game रहता and the way he played brilliant man all over the ground 360 था Bracewell आज offside leg side down the ground beautiful timing जबरदस्त पारी थी उसकी आज and commendable two brilliant innings today we saw Shubman Gill again first innings if I talk about his knock he carried India well like उसका जो double 100 था it's not like कोई और 100 मार दिया कोई और 50 मार दिया that double 100 was the solo reason India reached that target it was a one man army kind of show like from Shubman Gill brilliant batting very good timing he got a bit lucky in terms of drop chances मगर overall great performance from Shubman Gill and he was the match winner उसकी वजह से India match जीते from New Zealand's point of view of course they will be gutted for losing the game they will go back to that last few overs the way they bowled Ferguson getting trumped for 3 sixes and just the last few overs if they just bowled that a bit more tighter they would have been in the game but who would have thought 131 for 6 who would have thought New Zealand would take this game to the last over and give India such a big scare I honestly didn't think it would be like that I thought India should have wrapped it up again we'll discuss India's bowling the death bowling and there will be plenty of criticism because आप World Cup year में हैं और ऐसा मौका लेकिन जब आप 6 विकेट ऑपोजिशन करवा देते हैं फिर उसके बाद इतना बड़ा पार्टनरशिप and you almost lose the game it's I wouldn't say it's not acceptable but it's worrying signs that's what I would say going to the World Cup पंड आज हैदराबाद में मैच हैदराबादी ऑन पॉडकास्ट टाइम पे पहुंच नहीं सकता है देखो फैज तो नहीं आया अभी तो हिज टिपिकल मैं तो आ गया 1-2 मिनट लेट मगर आ गया मैं मोहम्मद भाई कब से आपका वेट हो रहा है अरे शुक्रिया बहुत बहुत ब्रेसवेल ने इंडिया के होश उड़ा दिए थे भाई वाकई वो भी हैदराबाद में सब परेशान हो गए खामोश हो गया था स्टेडियम क्या कड़क कड़क शॉट्स खेल रहा था उन्हें वो भी अंडर प्रेशर सेकेंड इनिंग्स में और 11-12 रन रिक्वायर्ड था फॉर द लास्ट 15-20 ओवर्स इट्स नॉट लाइक लास्ट 6 ओवर्स में इतना रिक्वायर्ड था इन अ T20 दैट्स गेटेबल एंड ऑल दैट इसमें आपके 4 विकेट बाकी थे 15 ओवर में यू ट्राइंग टू लिव अप विद दैट आस्किंग रेट आसान नहीं है वो ये भागते हुए स्पिनर शार्दुल का क्या करना है मुस्तफा भाई तो शार्दुल ठाकुर पे मैं तो लेट्स गो इनटू द आई टेस्ट एंड लेट्स डिस्कस आई थिंक फैज भी जुड़ने वाले हैं सून विद अस बट लेट्स गो इनटू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द डे व्हिच इज द आई टेस्ट तो चिराग भाई शार्दुल ठाकुर के साथ शुरू करेंगे उसके पहले 3-4 ओवर जो भी थे अच्छे करवाए उन्हें ही वाज बॉलिंग वेल मगर जहाँ पे ये फसाद शुरू हुआ जो न्यूजीलैंड वापस आई गेम में वो शार्दुल ठाकुर के साथ ही हुआ ब्रेसवेल picked him up he targeted him and consistently smashed him throughout till the end and again he was trying to hit that good length but Bracewell was picking it no problem at all उतना पेस भी नहीं था ठाकुर का यॉर्कर मिसिंग आप कितने भी लेंथ बॉल्स आई नो टुडे द लेंथ बॉल्स वर वर्किंग एट टाइम्स बट आप कितने भी डाल दो लाइक डेथ ओवर्स में स्पेशली टुवर्ड्स देन जब कोई बैट्समैन मारा यॉर्कर इज योर गो टू आई डिडंट सी मच ऑफ दैट एंड ही वाजंट एक्यूरेट इनफ पेस भी उतना नहीं था but Shardul Thakur is that utility player that's why he played आपको बैटिंग भी देता मगर अगर आप आज देखे बैट के साथ भी नहीं बॉल के साथ भी नहीं it was one of those days that he'll want to forget do we still stick with him in the 11 I don't know we should still stick with him in the squad I think you've interested him now try to back him a few more games there's a few more series before the World Cup try to back him and see what happens मगर आज का performance तो भाई भूल जाओ उन्हें उसके वजह से मैच इतना क्लोज हो गया था of course you have to give credit to Bracewell that you can't just put all the blame on Shardul Thakur मगर आप देखें हार्दिक पांड्या और सिराज कैसा bowling करे the way they were mixing it up also Shardul Thakur is known to mix it up मगर he wasn't mixing it up properly और उसका Yorker missing है वो pace भी missing है हार्दिक पांड्या के पास slower ball है but his faster ball is also deceives the batsman that's where Thakur was missing I felt सिराज भाई दिल जीत लिया आज और वो भी मियाँ भाई चल रहा था बैकग्राउंड म्यूजिक ग्राउंड पे जबरदस्त डाला आज सिराज what a bowling performance him and Pandya were outstanding in the death
Sunay Rohit wants a player more unfit than himself, and so he added Shardul. Oof, that's harsh. Yeah, man. Like I think Thakur's performance today for sure was disappointing. I was not impressed with it, and something that he will have to work on. The death bowling in particular. I felt he started off well in the match, but जो end के overs थे, that was not up to the mark. But if you look at from India's performance, let's talk about their batting first. Shubman Gill, what a player! Amazing. There's so much talk कि आप ईशान किशन को कैसा छोड़ सकते जब उन्होंने डबल टन मारा. मैं खुद बोला I like to see ईशान किशन in the team opening the batting, but Shubman Gill has shown consistently in the last few series that he's the man, he's your opener, he's the next generation. Or double hundred मार दिया. At today's innings, what I wanted to point out is कि he didn't get that much support, and it wasn't like a very good, very easy pitch to bat on. Of course, it was a good batting wicket, and one of our friends, Nihal, had said yesterday कि 350 होने वाला है. But if you see all the other batsmen, they did struggle a bit. They did lose their wicket. He made sure he was there till the end, and the way he accelerated in those last 3-4 overs, it shows उसके पास फोर्थ फिफ्थ सिक्स गियर है शुभमन गिल के पास. उन्हें खाली टुक टुक प्लेट नहीं है, उन्हें एक्सेलरेटर भी कर सकता वंस ही सेट. एंड आई रियली लाइक दैट ट्रांजिशन वाज आउटस्टैंडिंग. एक वक्त पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई नहीं पहुंचने वाला है 200 को, मगर उन्हें पहुंच गया. और जो फर्ग्यूसन को टारगेट करा, मतलब हैट्स ऑफ. इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम शुभमन गिल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एंड इट वाज इन द एंड दैट वाज द डिफरेंस इन द गेम. बहुत जबरदस्त. और हमारे भाई लोग जुड़ रहे हमारे साथ. हार्दिक भी अच्छा नहीं डाला भाई, 7 ओवर में 70. आई नो इन द बिगिनिंग हार्दिक भी बढ़िया था, मगर एंड के अगर आप जो ओवर देखे हार्दिक के बेहतरीन थे. बट ऑफ कोर्स हार्दिक और एक ये प्रॉब्लम है कि भाई फिटनेस का उन्हें फिजियो लगातार उसके साथ था बैठा हुआ. वी सॉ सब्स्टिट्यूट, आई थिंक गायकवाड या कोई आए थे अंदर फील्डिंग करने. तो हार्दिक का यही है, फिटनेस का इशू है. डॉक्टर फूड ही बड़ा मैच इतना क्लोज होने का नहीं था. बट ओके डॉक्टर फूडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज रहे तो इच मजा आता है. एग्जैक्टली, मतलब आई एंजॉयड इट कि ऐसी मैच रहना. बट अगर आप इंडिया को क्रिटिसाइज, अगर इंडिया को पॉइंट आउट करेंगे परफॉर्मेंस, दे वुड नेवर वांटेड टू गो दिस क्लोज, स्पेशली जब ऐसे पोजीशन में थे, जब 6 विकेट चले गए, 130 रन है. तो यू डेफिनेटली डोंट वांट द गेम टू गो लाइक दैट. बट इफ यू वाचिंग फ्रॉम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, जस्ट एक्साइटिंग पर्सपेक्टिव, जबरदस्त मैच था. और क्या बैटिंग करा उन्हें. ब्रेसवेल, सैंटनर को भी उसका भी तारीफ करना जरूरी है. डॉक्टर फूडी, आप ये बताओ, आप मैच में थे नहीं थे? बिकॉज यू आर सपोज टू गो, लेट मी नो. अगर आप गए तो थोड़ा एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करिए आप. शार्दुल does give batting a bit, but he plays primarily for his bowling. He can be good, but we have seen that he can single-handedly lose the game. That is absolutely true. And look, I don't think Shardul Thakur will be a starter right now. He's not a confirmed starter in Rohit Sharma's plans, but he has to develop squad players. He can't just rely on Umran Shami and Siraj every single game. You will have to develop squad players, whether that's Shardul, whether it's Deepak Chahar. Prasidh Krishna is not in the reckoning because he's injured. मगर आपको bowlers develop करना पड़ेगा. Arshdeep को भी develop करना पड़ेगा. The reason why they backed Shardul probably over Arshdeep in this particular series is because he bats. So he'll have to develop players, and Shardul will have to learn for this and come back stronger. Because of course you'll have moments, but at least look at the positive कि ऐसे series में why not in a World Cup. रजत पाटीदार आया था अंदर, सॉरी पाटीदार आया था, नॉट गायकवाड, पाटीदार आया था. एंड वही उन्हें फिजियो के साथ लगा हुआ था हार्दिक पांड्या. सो दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट. पैसा वसूल, ऑफ कोर्स मैन. क्या एटमॉस्फेयर था इन हैदराबाद, मैन. व्हाट अ ग्रेट match. Yes, few bad overs and some sloppy fielding. Yes, I did go. The atmosphere was buzzing with Shubman. अरे भाई पूरा गेम अटेंड करे आप क्या. And what happened towards the end, like खामोशी दिख रही थी जब ब्रेसवेल छक्के मारा था. सब एकदम से चुप हो गए थे. बट लाइक ओवरऑल आपको कैसा दिखा, लाइक शुभमन की बैटिंग और Bracewell की भी बैटिंग? It was you saw two world class individual performances. I think as teams, both teams made mistakes और गलतियां करे, लेकिन ये जो दो individual performances थे, क्लास मैन, क्लास. क्लोज जाता, फिलिप्स मारता, समझ आता. ये ब्रेसवेल तो पूरा बैट्समैन भी नहीं है. मगर मैं एक चीज बोलता हूँ ब्रेसवेल के बारे में, he used to be a top order batsman and a keeper. The commentators were mentioning that as well. So he has batted, like he is a batsman, but he's not considered in this team. I know where you're coming from, चिराग भाई. और बिल्कुल अगर आप ऐसा वैसा देखें तो कि भाई 6 डाउन अब प्रेशर है ऑपोजिशन पे, इतना क्लोज नहीं आना था. ठीक है, एक पार्टनरशिप लगा दी है 70-28 का, 70-60 जो भी है, लेकिन 100 के ऊपर पार्टनरशिप, वो भी लास्ट ओवर तक जा रहा है. वो भी मैच हार जाते थे उन्हें अगर आउट नहीं हुआ तो. इफ ही स्टेड देयर और 2 बॉल शार्दुल को खाली 2 छक्के उड़ाना था, उसको उड़ा देता था. न्यूजीलैंड के इनिंग्स में फर्स्ट 25 ओवर सब लाइट लेके थे, लोग घर जाने की सोच रहे थे. बट देन थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग. एंड
Man, it's great that everyone stayed back and वो माहौल बना, because it looked like हाँ ठीक है, let's beat the traffic and go home, ये one sided हो जा रहा, मगर क्रिकेट में never say never. It was honestly it was a miracle knock जो ब्रेसवेल का था, because of the situation. आप अंडर प्रेशर जब चेस कर रहे 300 के ऊपर, मजाक नहीं रहता, स्पेशली 350, रन रेट आपका 11-12 चल रहा, आसान नहीं है वो. But the way they both batted, it's something out of their skin. It's I think it was one of the best partnerships I've seen in a while, especially under pressure. I did not expect that from both of them, and that's why I rate this partnership really highly. And if he chased this down Bracewell, this would have been one of the best knocks of all time for sure. Bracewell made the match worth watching. जबरदस्त खेला, पट्टा आउट नहीं होता जब तो हल्लक था, आगे थे सबकी, भाई हल्लक में था मैच में, मजाक नहीं करो. रोहित शर्मा एकदम से लास्ट 3-4 ओवर्स होने भी परेशान हो गया, विराट कोहली भी खामोश हो गया, सब परेशान हो गए थे. हल्लक में तो आ गया था मैच, 100% आ गया था, फट गई थी सबकी. एंड you have to give credit to Bracewell there. Of course, we will criticize, the Indian bowling, but Bracewell जो खेला भाई, एक छक्का उन्हें कुलदीप को मारा extra cover. If I was in the stadium, I would have applauded that. That was an incredible shot, and he showed that leg side पे भी उन्हें sweep arm भी अच्छा खेल सकता, pull shot भी खेल सकता, और सीधा भी छक्के मार सकता उन्हें. सैंटनर का एक मैं नोटिस करा, उन्हें पूरा फेस डालता बैट का, फुल फेस, ऐसा प्रॉपर शॉट्स खेलता उन्हें, इवन इफ इट्स स्ट्रेट या ऑफ साइड पे, पूरा सीधा बल्ला लेकर आता उन्हें सैंटनर. दैट्स व्हाट आई नोटिस. बट इन्हें जो था भाई, ब्रेसवेल तो हर जगह खेल रहा था. ही प्लेड अ फ्यू स्कूप्स एंड एवरीथिंग. दैट हार्दिक आउट, ये टेक्नोलॉजी का क्या फायदा रह गया है. या आई एग्री दैट वाज नॉट आउट. आई डोंट नो, थर्ड अंपायर कैसा दे दिया वो डिसीजन, को अभी तक समझ में नहीं आ रहा. डॉक्टर फूडी, आप अगर वो टाइम पे स्टेडियम पे थे, और इफ यू सॉ दैट मोमेंट, व्हाट वर योर थॉट्स? वो लोग बिग स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिखाए, बिकॉज टीवी पे तो क्लियरली दिख रहा था कि डे लाइट बिटवीन बॉल एंड स्टंप्स. और मेरे को नहीं मालूम क्यों आउट दिए वो हार्दिक का, तो बिल्कुल आउट नहीं था. अनलेस यू गाइज हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, प्लीज लेट मी नो. मगर मेरे हिसाब से तो वो तो बिल्कुल ही आउट नहीं था. वेरी अनलकी फॉर हार्दिक पांड्या. He should not have been given out there, and it's poor technology, poor from the third umpire. He should have definitely seen that. I don't know किस हालत में. रवि शास्त्री तो परेशान हो गया. Hardik still doesn't look fully fit, getting physio at the boundary. Some concern. That's exactly what I mentioned a few minutes ago, Punter, and this is the problem with Hardik Pandya. He is extremely talented, but today even the commentators, even Danny Morrison said कि भाई, this guy is outstanding talent and everything, but the biggest concern is fitness. उन्हें आके डाल दिया एंड में, overs ठीक है, but he is not looking fully fit, and this is going to be a problem. You don't have any other fast bowling all-rounder. You have to develop fast bowling all-rounders. Yeah, I mean, batsmen who can bowl medium pace. You have to develop that. You can't just rely on Hardik Pandya because he is not fully fit. इन्हें अगर इंजर हो गया, वर्ल्ड कप नहीं खेला, तो प्रॉब्लम हो जाएगा इंडियन टीम को, पूरी बैलेंस बिगड़ जाएंगी. They have to work on that. I've been saying this for a long time. You cannot rely on Hardik Pandya. He's not fully fit. But yeah, let me know for you guys, what was your favorite moment of the game. There was plenty, whether like India, I think the way they started off bowling, brilliant. Kuldeep again outstanding. Siraj home ground पे पहली मैच खेल रहा, मियाँ भाई लगा रहे थे स्पीकरों पे, जबरदस्त म्यूजिक भी चल रही थी, and I think he was just soaking in that occasion, and it just shows how he's grown as a player. अगर आप देखें अभी उन्हें नर्वस नहीं दिख रहा, उतना कॉन्फिडेंट दिख रहा. he knows exactly उसके क्या प्लान है, लाइन लेंथ क्या डालने वाला है. डेथ ओवर्स में मैच हल्लक में आ गया था, नो डाउट. he could have easily succumbed under pressure because he is the crowd is expecting more of him. He's the local guy. लेकिन I think he took that in his stride कि भाई मेरे को support करे, let me give him a very good performance, and that confidence you can see in his bowling right now, and especially in the death, that's what's impressing me from Siraj. Dr. Foodie is saying Hardik was struggling the entire match, constantly stretch कर रहा था physio के साथ. भाई, these are worrying signs. Thank you for letting us know, because you were there at the game, and off the camera और नजर आता आपको, because camera तो they focus on specific things, but if you're in the stadium and you're trying to pick something out, you can see everything. You have the full view, you can see everything, and the fact that you're saying that, it is worrying signs for India for sure. Uski fitness, Hardik was very pissed. That 6 to Kuldeep by Bracewell, even though he pushed it wider, same coming down the track, was outstanding for me. That's what I said. That was my favorite shot of the game. Kya shot tha wo. Because Kuldeep did push it, and there was a stumping on the cards over there. मगर जो उठाया उन्हें कवर के ऊपर, अम्मा मैं जब मेरे को ऐसा लगा भाई गेम ऑन हो सकता, बिकॉज ऐसा शॉट कॉन्फिडेंस के साथ अगर खेले ऑन अ पिच which it was turning a bit,
I think that just that this guy is in that just prove that this guy is in unbelievable form and he's going to take this game close. मगर फिर भी उन्हें इतना क्लोज लेके गया, मैं कभी भी ख्याल भी नहीं था मेरे को. शमी भी फुल टॉस डाल रहा था एंड में. He is too out of form. Disappointing performance from Shami. I think I really rate him. I really like him. He's a strike bowler, very experienced. But again, I think when he gets the opportunities, he has to be more ruthless. Especially when he's given the ball in situations where his team is in front. They don't have much to worry about. You expect him to come and bowl with a discipline, line length, nail those Yorkers when required. And I didn't see that from him today. So I was disappointed from Shami. So yeah, you pointed that out. Overall, look, India will have to look at who their options will be. But the problem is what I've seen, recently, that हर मैच में कुछ ना कुछ वीकनेस निकल जा रहा है आपको. आज शार्दुल था, शमी वाज नॉट लाइक दैट ग्रेट बैटिंग में भी, अपार्ट फ्रॉम शुभमन उतना परफॉर्मेंसेस नहीं थे. तो कुछ ना कुछ वीकनेसेस आ जा रहे हैं हर मैच में, विच दे ट्राइंग टू एड्रेस. एंड एक एड्रेस करो तो दूसरा प्रॉब्लम आ जा रहा. फॉर एग्जांपल अब उमरान मलिक आ जाएगा नेक्स्ट मैच में, शार्दुल नहीं रहेगा, फिर आपकी बैटिंग अगर हल्की हुई, it shouldn't be a problem, लेकिन वो हो सकता problem. That's still a weakness which can be exposed. So this Indian team is not complete by any means. There's a lot of work to be done. Slight adjustments, but they have to make important adjustments. And you have to find a some sort of cover up for Hardik Pandya. That doesn't mean a like for like in terms of talent, but like for like in terms of ability. You have to get a batter who bowls medium pace. I don't know where they're gonna, whether that's Venkatesh Iyer, Shivam Dubey, if they want to stick with Shardul Thakur, but you have to develop someone because at least that will take some pressure off Hardik. He can focus on one aspect and then take it smoothly. Unfortunately, वैसा है उसका structure. He has been injury prone. That Asia Cup in 2018 में जो injury हुई थी हार्दिक को, उसके बाद he's not fully recovered, and it's been nagging, those injuries for sure. Apart from Siraj, we don't have venom in our fast bowling. Umran Malik provides that, I think, when he's back, hopefully. And if Bumrah comes back, hopefully he'll provide venom. But I agree, today वो venom नहीं दिख रहा था. Especially जैसा मैं बोल रहा हूँ, जो situation में थे, उसके बाद तो venom तो दिखना चाहिए था भाई. You had them on their knees, the opposition. The game was almost done, and you just let them back. And of course, I will credit Bracewell. We played so well. And he didn't. I don't think he gave any chances. If I'm not mistaken, I don't think he gave any chances. Whereas Shubman Gill के innings में थे एक दो chances. इन्हें I don't. If you guys can let me know if I'm wrong, but yeah, it was incredible knock, but yes, your bowling has to be more disciplined. Length, उन्हें शार्दुल length पे pick हो रहा था, ठीक है, it helped him in the first 5-6 overs. मगर death overs में you have to nail the Yorkers. You have to, if you're bowling the slower ball, then you have to have a quicker ball also. You can't be so predictable. Your change-ups have to be accurate. Would you have got Siraj back after 6 wickets, fell to close the game? What changes would you have wanted Rohit to do after this 6th wicket? Look, this is a good question. First of all, whoever is given the ball, I expect them, they're playing for India, I expect them to take the wickets, whether that's Siraj or whether that is Kuldeep or Washington Sundar or Shami, who was the other bowler, Shardul. I expect them to take the wickets. Look, they kept, in hindsight, if you look at it, it could have gone, you could have got Siraj closed out the game, but then you needed Siraj in the end. If Siraj didn't take those wickets at that time, फिर end में और ज़्यादा, maybe New Zealand would have chased it. So it's hard to say if Rohit got it fully wrong. लेकिन you want your bowlers also to perform at the same time. Yes, Rohit, I think captaincy wise there will be questions, field placements, bowling changes, everything there will be, of course, and rightly so. Or whenever he lost it, when Shardul got hit for that last 6 in that last over, Rohit की शक्ल देखना था, गाली भी निकल गई थी if you guys read his lips. So you have to ask the players like Bumrah, Siraj, Umran to improve batting rather than bringing low quality bowlers like Shardul just for their batting. Look, of course, and they should work on their batting, but also you need your batsmen to take more responsibility and say, listen, these are the bowlers, we will bat till the end, no problem, you give us the wickets. That's how you'll have to play it out. India in the 2011 World Cup, they went with Zahir Khan, Munaf Patel, Ashish Nehra. They're not that great with the bat. Magar Zahir aake ek do maar deta tha chakke, Harbhajan would chip in. So you need something like that. You need, of course, Bumrah to improve his batting a bit, which he has, I think. Siraj also needs to hit a few boundaries here and there, but I think you need to go with fully fledged bowlers because उन लोग बचा ले सकते हैं आपके 30-40 रन. मगर अगर आप if you're going to go with the medium pace bowler who's a bit who has a line length which is predictable, then it won't do you any good, I feel.
Rohit got Hardik back to get him in form, but got hit for 20 runs, which changed the momentum. Yeah, it did change the momentum. He got him back to, but again, Hardik Pandya is your main all-rounder. Of course, you want him to, you expect him to pick up wickets. You expect him to bowl disciplined. He got hit, unfortunately. Lekin I felt I would, I didn't mind that he went with Hardik at that time. But Hardik has to step up at that time. सिराज को आप डाल सकते हैं, एक बॉलर कितना करेंगे, 10 ही ओवर है उसके, आप उसको कभी भी लेके आओ, अगर उन्हें नहीं लिया वो विकेट वो टाइम पे, उन लोग आके किसी और को मार देते थे 20 रन, हार्दिक को बाद में भी मार सकते थे, और इवन तो नहीं हुआ वैसा, लेकिन वही तो है, राइट? दैट इज where the bowlers have to step up in certain situations. For you guys, whose innings was better, Shubman or Bracewell? I think they were both outstanding. Both zabardast. Shubman got more runs. Bracewell got runs under pressure. So they were both great innings. Both zabardast. Shubman ka bhi under pressure hi tha. He didn't, wickets were falling at the other end, and the way he accelerated from 150 to 200, incredible tha. ओहो, सुनील को एक कुलदीप के 2 ओवर्स घर लेके जाएगा रोहित भाई, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी वेरी गुड पॉइंट. अगर मैं कुलदीप यादव का मैं फिगर्स देखूं अभी, 8 overs 43 रन 2 विकेट्स, इकोनॉमी ऑफ फन, वेरी गुड पॉइंट. एंड द रीजन व्हाई ही डिडंट बॉल हिम बिकॉज़ देयर 2 लेफ्ट हैंडर्स, और वो जो छक्का पड़ा उसको कवर के ऊपर, उसके बाद रोहित नहीं दिया बॉलिंग, मगर देना था, आई थिंक देना था. लेग स्पिनर ही आपको विकेट लेके आएंगे, ब्रेक थ्रू लेके आएंगे, और उसको नहीं दिया, मेरे हिसाब से वो गलती था. बट मैं आपको खाली रीजनिंग दे रहा हूँ व्हाई ही डिडंट गिव हिम दैट. 10 रुपीज की अरे भाई, ये हर मैच में चलता है ये चैंट. आज भी कोई बोल रहे थे 10 रुपए के पेप्सी मियाँ भाई सेक्सी सिराज के बारे में. तो या बहुत पॉपुलर चैंट है वो. वकर व्हाट्सअप मैन, हाउ आर यू, हाउ डिड यू एंजॉय द गेम, आर यू इन हैदराबाद, आर यू इन कनाडा, वेयर आर यू ब्रो? But yeah, man, I think this comment about Kuldeep, it was a very good point out over there. I know why he didn't give it, but when you have figures like that and you have a leg spinner in your wings, he's the one who can get those wickets. शार्दुल को भी भाई लास्ट ओवर में अगर वो और 2-3 विकेट थे बचे हुए, उसको पड़ जाते थे रन, मेरे को ऐसा लग रहा था. इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड क्लोजली, न्यूजीलैंड बैट्समैन डिड बेटर देन इंडिया. Only Shubman took us to 350, and that is what I'm saying. That's why I rate Shubman's innings very highly. The batting was exposed. It was only Shubman who performed and उन्हें अकेले संभाला. 200 उन्हें मारा 350 में, तो बाकी सब 150 मारे मिला के. So yeah, 100% man. If you look at New Zealand, it was 2 batsmen, and that's why they got so close to that target. And yeah, the difference was वो फर्गसन को जो 3 छक्के पड़े, अगर नहीं पड़े थे वो, या 1 छक्का पड़ गया तो न्यूजीलैंड लेके चला जाती है मैच. बट who would have known, right? When you have that situation, who would have known New Zealand would get this close? And now I'm going to take a bit of a break and take a bit of a breather because हैदराबाद में मैच चल रहा तो लेट आना जरूरी है. अरे भाई लेट आना क्या था, दिल का दौरा पड़ गया था जरे में पिंडा, क्या कर दिया उन्हें. ओ माँ, आई मीन व्हाट एन इनिंग्स मैन. 140 क्या के फोड़ दिया यार सबकी. मतलब आई डोंट इवन, आई मीन शुभमन गिल 200 मार के भी खुश नहीं था आज. मायूस हो गया था एक सिचुएशन पे. ही वाज लाइक अरे यार मैं 200 भी मारा तो कम पड़ा. आई थिंक लाइक 200 भी अब इनफ नहीं है. 2020 मेंटालिटी अगर आ गई पूरे में 50 ओवर में तो वी गोना सी अ 500 वेरी सून मैन. But Bro, yeah. I think you said that well, like शुभमन गिल की मैं परेशान हो रहा था मैं, because हल्लक में आगे थे उन्हें विराट कोहली आई थिंक मजाक भी करा एंड में कि भाई तुम बच गए, लाइक एटलीस्ट इट्स अ विनिंग कंट्रीब्यूशन है, तो पूरे 200 रन पिंडे में मिल जाते थे, और लाइक आई वुड हैव फेल्ट रियली बैड फॉर हिम. But Bracewell also deserved it, man. क्या इनिंग थी भाई, क्या इनिंग, all over the place. स्वीप शॉट्स भी खेल रहा था. वो कुलदीप का छक्का देखे तुम, वो जो कवर के ऊपर सीधे भी, सीधे कड़क सीधा, मतलब तुम्हारे घर के पास लैंड हो रहे थे बॉल सीधा वहां से. हाँ, वहां से कॉल कर रहे फैमिली बोल रहे कि भाई वो सुबह में भी थे, फिर उन्हें बोल रहे थे शाम में भी छक्के आ रहे थे, कई को आ रहे छक्के. फिर बोला नहीं भाई वो पागल ब्रेसवेल मार रहा हूँ. थोड़ा गुस्से में आ गया. उसके बिरयानी में इलायची ज्यादा डाल दिए शायद, तो जरा फिरी हुई उसकी. लेकिन ब्रो मैन जितना भी बोला, I'm not even like, I'm very happy that to an extent we won, but I'm not also happy with this performance. I mean we've been constantly अपन ना बोल रहे कि भाई टेल खत्म करो, ये टेल नहीं थी बोल सकते. Towards the end of the innings था, चलो ठीक है, but भाई ये
अलग ही बैटिंग थी एंड एवरीवन वेंट डाउन मोमेंटम. हार्दिक पांड्या तो बहुत खाया आज, भैरिया बहुत खाया उन्हें. But those 2 overs in the end where अच्छा Hardik था Pandya लैंड में got, अच्छा. हाँ एंड में जो आके डाला उन्हें, it showed like चलो उसके गोटे मूवमेंट नहीं है, भाई like वो विश्वास. प्रॉब्लम, मैं उसके टैलेंट पे नहीं हंस रहा हूँ मैं, उसके उन्हें फिट ही नहीं इंजरी. यार, वो देख फिजियो ऊपर चढ़ गया था उसके आज. भाई बोलो नहीं फिट है, उन्हें नहीं है फिट. फिट तो Ben नहीं दिख रहा. Stokes, I mean he Ben kept Stokes, calling for Hardik the Pandya. physio. There's levels to this game. I keep telling you, there's levels to this game. वो तो है भाई, obviously it's a learning process and it'll Finally, take मान time, लिया bro. तुम. No, I'm let's take a let's take a couple more comments. Ishan Kishan in the middle order. Is it a good call? Punter is asking. Ishan is not helping himself right now, punter, to be honest, and I think he needs to sort of make an innings out of whatever chances he's gonna get. वरना फिर KL राहुल भाई आने वाले हैं and every एक gate ही उनके तो लिए खुल मैच मिला जाएगा. बेचारे को मिडिल ऑर्डर में. दो मिल गए ना मिडिल ऑर्डर में तो है, बट दो चांसेस विदाउट केएल राहुल इन द स्क्वाड बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल मिल कौन चुके से? हैं उसको जहाँ पे उन्हें कन्वर्ट नहीं करे. लास्ट ओडीआई नहीं, मतलब इन द सेंस दैट इफ यू आर कंपीटिंग द फर्स्ट ओडीआई, द टी20, सॉरी टी20, श्रीलंका में जो हाँ टी20 T20 मिला में नहीं उसको, करा था, मगर मैं टी20 एक में चीज नहीं बोल करा, फिर दूं. अभी भी नहीं करा. I think it's a good call because you need a left-hander as well in your top order. I think that's why it's a good call. अब उन्हें perform करता नहीं करता मैं को I don't know, but if you look at it overall, if I'm going, I would have gone with him in the middle order before the match. I would have 100% done that. So I think yeah, it हाँ, was a good call. इट इज अ It गुड didn't pay चेंज off. ऑफ. या इट डिडंट पे ऑफ एंड लाइक सिचुएशन जो थी, एक टाइम पे अपन 4-5 विकेट खो दिए थे, फिर पांड्या आल्सो गॉट आउट, इट वाज लाइक मेस्ड अप. बट आई मीन शुभमन गिल जो भी बोलो भाई, ही केप्ट पेसिंग द इनिंग्स. आई नो लॉट ऑफ कंप्लेंट्स हो चुके हैं कि भाई उन्हें पावर प्ले के बाद रुक जाता, ये करता वो करता. आज कुछ भी नहीं. आई थिंक आज शुभमन गिल टोटली कंट्रोल में था, एवरी शॉट सही लग रही थी उसको एंड ही केप्ट पेसिंग. इट वाजंट अ स्लो इनिंग्स एट ऑल एट एनी पॉइंट ऑफ द गेम. आई डिडंट फील कि उन्हें कहीं स्लो कर दिया. 208 ऑफ 149 balls is like a fast innings. And I mean Surya Kumar could have done better probably for me. So, I know he got out unfortunately, but expectations थे Surya से काफी, and you saw the crowd, they were going wild Surya के पीछे. Yeah, kudos to Shardul for bowling a Yorker pitch map. Sure, it was the lone Yorker ball to Bracewell, and he got a bit of you. Bhai, so that is stupidity, right? Like you're only bowling one Yorker, and that is the one which got you the wicket. उन्हें खाली length balls डाल रहा था, छक्के उड़ रहे थे उसके बल्ले से. You can't. You have to in the death overs. You have to nail those Yorkers. At least try and nail them. I know, like उसको स्वीप भी करे थे, किसको सिराज को या हार्दिक को उन्हें शफल करके मारा था, लेकिन इन्हें शार्दुल ठाकुर उनको समझ में नहीं आया. लेकिन पेस भी उतना नहीं दिख रहा था उसका, एंड यॉर्कर्स नेल नहीं कर रहा था. आफ्टर शुभमन सेकंड हाईएस्ट इज 34, बिल्कुल ही उस पर छोड़ दिए थे 100%. भूमि, अरे डॉन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. भूमि फॉर शमी, दीपक फॉर शार्दुल, केएल फॉर किशन. ओ केएल वापस लेके आ रहे हैं डॉन. तो ब्रो ब्रेसवेल averages 48 in list A. No way he's tailender. Yeah, he plays in the No, top order in yeah, domestic I'm cricket. not saying that he's a tailender. Like we were done, हो गया था, like we were towards the end. ऐसा लगा कि आज स्ट्रीम जल्दी होगा, ऐसा लगा कि भाई आज हमला जल्दी आना पड़ेगा. At 5 wickets you ideally think, and the situation at New Zealand still has been in recently. अगर आप देखो उनला नहीं ऐसी पार्टनरशिप आप नहीं देखे रिसेंटली में, और जिस तरीके से अपना बॉलिंग कर रहे थे, पूरे नजर वो कमेंटेटर चीपड़े लगाए, बोलो ना, मैं पूरा टाइम तारीफा कर रहे थे, सिराज लाइन एंड लेंथ, दिस लाइन एंड लेंथ, डिसिप्लिन एंड ऑल ऑफ दिस. एंड देन वो fifth and sixth wicket आए बाद, like Chirag bhai and all of these guys keep playing, but tail नहीं निकाल सक रहे अपन. And I'm not saying tail, I'm just mean like toe end of the list. That's all I'm saying. I'm not in any way disrespecting Michael Bracewell. He's a phenomenal batsman. भाई उन्हें तो फोड़ दिया, but खत्म करो यार. इतना अच्छा डिसिप्लिन से डाले आप एक 25-30 ओवर्स, उसके बाद आपको क्या हो और गया. हाँ, अब देखो सैंटनर भी नहीं है प्रॉपर टैलेंट, ही इज अ ऑलराउंडर, लेकिन ही इज नोन मोर फॉर हिज बॉलिंग. व्हाटएवर इट इज, यू हैव देम सिक्स डाउन. अगर वो टाइम पे, अनलेस इट्स एबी कमिंग इनटू बैट, यू नीड टू फिनिश ऑफ द टेल, लाइक स्पेशली व्हेन यू हैव सो मेनी रन्स ऑन द बोर्ड, इतना रिक्वायर्ड रेट भी ऐसा नहीं था कि इन चेक था, इट वाज क्लाइंबिंग एवरी सिंगल डिलीवरी. तो या आई डोंट थिंक देयर वाज मेनी एक्सक्यूजेस ओवर देयर. और केएल भाई उन लोग, राहुल, या केएल राहुल yeah, Rahul कैप्टेंसी कर captaincy रहा कर होता रहा तो होता तो we would have ensured New Zealand won. What did you think about Rohit Sharma's captaincy? मतलब let it slip over there, but what were your thoughts? ओवरऑल देखो भाई, रोहित शर्मा tried his best with whatever he had, and I don't think उन्हें कुछ ज्यादा गलत करा in terms of captaincy. I mean, he got you 5 down. He had good changes. Whatever bowlers were sparkling, he was getting them in. Also, he tried to get Shami in. Shami पिटा. Then he, Kuldeep Yadav, भाई ये बंदे के बारे में तो बात करेंगे अपन, because this guy has been the best bowler right now.
in उसका the spin कोटा खत्म department. नहीं करा मगर कुलदीप का। वही मेरे को बस वही एक चीज पे आ रहा था कि भाई जब लेग स्पिनर्स का अच्छा खासा दे वर कंट्रीब्यूटिंग, आप 2 ओवर दे देना था। मे बी आई थिंक उनको वही लगा कि भाई पिच स्लो हो गई या कुछ हो गया एंड मार के उन्हें फोड़ देंगे। अगर वन ऑफ बिग ओवर आ गया 30-24 का कुलदीप से, देन इट बी अ वेरी बिग कॉल ओवर देयर। तो मेरे को खाली वही लग रहा था कि दैट वाज द ओनली फैक्टर, बट वॉशिंगटन सुंदर को भी दला रहे थे, बट उन्हें भी पिटराइज था, तो मे बी उस वजह से नहीं डाल रहा था। बट ओवरऑल अगर आप रोहित की कैप्टनसी देखो, नॉट मच दैट ही कुड हैव डन। बॉलर्स की लाइन बहुत गलीज चली गई थी एक टाइम पे, दे डिडंट नो वेयर टू बॉल। ब्रेसवेल वाज इन दैट फॉर्म वेयर ही वाज डांसिंग अराउंड एंड सॉर्ट ऑफ मेसिंग अराउंड विद देयर हेड, एंड काफी बेहतरीन उन्होंने ही हिट फाइन लेग में भी छक्का मारा, ओवर ऑन में भी छक्का मारा, हर जगह मारा था, सो यू कुडंट डू एनीथिंग एट दैट टाइम। Batting is a disaster today. Next highest score after Gill's 200 is just Yes, 34. everyone is like उस पे चटेके हुए पूरे। और शार्दुल वन वाइड यॉर्कर के लिए 3 वाइड बॉल डालता है, बढ़िया सीधा सीधा चौका खा ले। दे शुड ब्रिंग इन अर्शदीप नेक्स्ट मैच, भाई किसकी प्लेस में? आई डोंट थिंक अर्शदीप इज इन द स्क्वाड भाई, तो उन्हें नहीं खेलेंगा। हाँ, उमरान मलिक विल प्रॉब्ली कम नेक्स्ट गेम। आई डोंट थिंक अर्शदीप इज या ही वोंट प्ले। अब देखा उमरान मिडिल ओवर्स में ना होने का नजीता देखो नतीजा। हाँ बिल्कुल, देखो उमरान मलिक इज समवन की जो बीच ओवर्स में आके विकेट्स लेता है एंड पुट्स मोर प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन. But we don't know with that extra pace, would have Bracewell like that or not. I don't think, there's always going to be a delivery which Umran would get probably a wicket. But again, we don't know. It's all ifs and buts. हम बोल सकते थे कि उन्हें आया तो नहीं जबरदस्त करता था, ये भी बोल सकते हैं कि the ball was coming onto the bat nicely, he would have played nicely. We don't know. We just need to go back to the basics of 2018 phase, get the spinner overs done by 40 to 42 second over. Yeah, I agree. Like especially when you have a spinner like Kuldeep who's your wicket taker. I understand कि 2 left-handers से वो time पे इसलिए नहीं कराया उसे, but then you finish them off earlier. Definitely, let him go for a few sixes. Even if Kuldeep got hit for 4, 5 sixes, what if he picked up that wicket? That would have been the game changer. Was it the game yesterday in the SA T20? What's the guy's name? Fasingo or someone, the left arm spinner? He got hit for 3 sixes first. Yeah, he got hit for 3 sixes, and then he on the fourth. I think who was it who hit him? Nisham. Nisham hit him for 3 sixes, and the fourth ball he got a wicket, and then they ended up winning that game, Chennai. So my point is that spinners might get hit, but they'll get you wickets which can win you matches. Which is your favorite 200? Rohit Sharma. Rohit Sharma. Which one? Oppa, which 264. 264. 264. Yeah. That's next level. I'd have Sachin to go. Sehwag, 3 Rohit Sharma, 1 Ishan Kishan, 1 Shubman Gill. I really like today's one because the way he accelerated. But I'm gonna go. It's Tendulkar. It was against Stain Morgan and these guys, right? Yeah, it was against. Yeah, and we. But वो भी उन्हें 200 पे आके रोक दिया था. मगर पहली बार कोई 200 मारे थे. India It was breaking Saeed Anwar and that record of was it one Zimbabwe का जो 194 था. इसका नाम भूल रहा हूँ. But हाँ, मेरे लिए सचिन का like I'm not the biggest Sachin fan. Right, I've criticized him all the time, but वो inning जबरदस्त थी. वो भी रोहित का क्या था? He just went on a rampage. उन्हें पागल हो गया था. But today, आज अगर अपन देखें, like you said, man, this was probably one of the best innings that we've seen, given the situation and the circumstances. Actually, they should stand out in all of the 200. ये आगे देखो नजर लगा इस मैच को पूरे को. डॉक्टर फूडी आगे. He went to the match and विराट कोहली को नजर लगा दिया पूरा. And Virat but he saw a great game. He saw two great individual performances. मतलब पैसा वसूल बोलते हैं वो. Like I just hope this guy I just hope he didn't go home with the public that was going home. He didn't go home. He said public जाने वाली थी, मैं नहीं गया बोल रहे थे. He said जबरदस्त हो गया था match. It was worth it. He didn't go home. Like आप मजाक समझ रहे. He's not like you, bro. He'll go for the game. आप बोल रहे हम छोड़ना नहीं चाहते. He's not like me. That's what I said. बीच में तो उठ के चले आते हैं. ये हैदराबाद का ग्राउंड छोटा होता जा रहा है. ओडीआई में तो बड़ा रख सकते. I think boundary ropes वो thing. The overall ground is pretty big. It's decent size. But वो boundaries छोटे करते रहे. Sachin baby is a player. The match exactly. I was the same thing. The match which should have ended max. Went on till the last over. Yeah, I mean वही तो है क्रिकेट का जिसका नाम है. आप कभी भी खत्म नहीं बोल सकते क्रिकेट को. And yeah, जिसका भाई बहुत लकी है माशाल्लाह कि आप ऐसा बेहतरीन मैच देखे. मैन अपन भी समझे भाई हो गया चलो मिचेल सैंटनर एंड दिस एंड चलो स्ट्रीम की सेटअप करेंगे. एंड देन लिटिल डिड यू नो एंड मैन ब्रेस्ट एंड सैंटनर मैन जितना भी आप बोलो वो सपोर्टिव रोल
उतनी बैटिंग नहीं आती होंगी, but he does know how to get the 1 and 2s, which will adding more pressure on India, and he kept giving the strike to Bracewell and letting Bracewell lead उन्हें the way. तुम नोटिस करे सीधा बल्ला सीधा लेके आता हर शॉट में, इधर भी क्या लेके? उधर भी, अच्छा पूरा बल्ला, हाँ, सीधा ओके, सीधा बल्ला। हाँ हाँ, बल्ला क्या बल्ला, क्या सुने तुम? नहीं बल्ला ही सुना मैं, मतलब कंफर्म कर रहा था, हाँ। दो 200 yeah, then ये same चीज मतलब I was going to write on the stream के heading that 200 are the new hundreds, जैसा orange is the new black था देखो back in the day, 200 are the new 100, and वाह यार, और वो भी कम दिख रहा साहिब भाई, like honestly इतनी कम 200 मार के भी खुश नहीं हो रहा प्लेयर, तो आप समझ जाओ क्या हो गया क्रिकेट का लेवल। इंडिया का मैच Oh yeah, लाइटली हो, not प्लीज only टॉक one, अबाउट मार्को यानसन। not only या one ऑफ कोर्स, Hyderabad team was like happy, the South African side I of was the Hyderabad supporting. players. I was watching. Faiz was watching the India game. मैं तो Sunrisers को देख रहा था. That's my team, bro. That's my team, man. Yeah. We'll talk about that. That was incredible. But deep down, we were rooting for New Zealand post 25th over, so the match worth it रहना देखने. But I'll tell you something, Dr. Foodie. I mean, I agree with you that match should be worth it. Worth But it. I think it was already worth it with that Shubman Gill innings. That 200 जो था जबरदस्त था. But I know where you're coming from. I also got excited. मेरे लिए worth it हो गया था to watch the whole game because last ball तक चले गया. You don't want to see one-sided in situations. But if you're looking at it from a Indian team perspective, if Fez who's really into the team, then he will be disappointed because match खत्म करना था और वो कर दिया. But अगर neutral perspective, ये match यादगार रहेगा. Especially for the people who बिल्कुल went to the नहीं, ground. भाई हम ऐसी innings देखे. दो चीजें दो. हैं इसमें, एक तो मजा ये है कि आप ये ऐसे इनिंग्स देखे दो, बट दूसरी चीज ये है कि भाई आपको टेंशन भी होती है एट द सेम टाइम कि भाई खत्म कर दे। अगर नहीं जीतते थे इंडिया भाई आज बहुत अपसेटिंग हो जाता था, लाइक इफ दे डिडंट विन डिस्पाइट शुभमन मेकिंग 208, अरे भाई दैट वुड हैव जस्ट लाइक क्रिएटेड हैवॉक इन द होल मीडिया कि भाई क्या है ये 200 भी बनाए तो ये प्लेयरों को भाई समझ में नहीं आ रहा बोल के। बट या 100%। मेरे हिसाब से जो मोमेंट ऑफ द गेम था, चेंजिंग मोमेंट, शार्दुल ठाकुर को जो पहला छक्का लगा उसके बाद और जो मोमेंटम भाई पिक करा ब्रेसवेल, ही जस्ट लाइक नेल्ड बट एवरी अब देखो सिंगल। शार्दुल ही खत्म करा तो सुने शार्दुल ही शुरू मुरली करा कार्तिक, शार्दुल हाँ मुरली कार्तिक बीच में बोल रहा था, आई थिंक आफ्टर हिज 100 इज लॉस्ट मोमेंटम बस हियर बोल के मोमेंटम बोला या ब्रेसवेल, फिर लास्ट वो धौड़ धौड़ धौड़। तो भाई मोमेंटम लूज नहीं हुआ था वो। द थिंग इज इतना प्रेशर he है has to फर्स्ट ऑफ pick his ऑल। deliveries man, उसको deliveries Yeah, pick भी करना है, and they were and he bowling has to decent make with sure that he hard. doesn't he has to make sure he doesn't get out. There's no batsman behind. He has to make sure he doesn't वाह get out also. He can't afford to go bang every single delivery, man. We need better wickets. इतनी flat भी अच्छे नहीं लगते. Pitches should have some swing and spin. But don't you think there's but something in this it in had these there pitches was in and this this there pitch? was yeah, I Apart from think those it two was incredible innings. कौन है यार, सुमन तेलुगु में रिपोर्ट पिच रिपोर्ट देता भाई, and they were talking about this in the commentary के भाई he mentioned के batting first will actually be easier than batting second because you will have spin in the end where it will be helpful for the bowler. So there was a lot of like कुलदीप की bowling देख लो भाई आप, क्या डाला उन्हें कुलदीप यादव। I know Washington सुंदर like थोड़ा बहुत नहीं कर पाया, but if you look at it भाई we were very disciplined till like what the fifth wicket we were so disciplined, line and line maintain करे। It was not an easy wicket to bat on, it was not flat by any means, but I mean मे बी ऐसा लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द वे शुभमन बैटेड, अदरवाइज आप देखो दोनों इनिंग्स में विकेट काफी जल्दी जल्दी जा रहे थे। Yeah, दो ही बैट्समैन खड़े रखे. I mean, you can say Santner as well. So three batsmen actually batted really out of their skin. Otherwise, it wasn't flat to that. But yeah, it was a good batting wicket, of course. And Rohit also mentioned it was a good batting wicket. He also said कि भाई we want to test ourselves, but this is not what I meant about test. मतलब बहुत close हो गया था game. अच्छा at least he said that like Hardik Pandya would have said कि I want to put them in situations like these बढ़िया। हार्दिक पांड्या को तुम चढ़ा बढ़ा के सब वो कर देते. नहीं थर्ड यार अंपायर बॉय के टैलेंट के ऊपर नहीं बोल सकते भाई, कॉमन सेंस नहीं यूज करे ना अंपायर के बारे में. और हार्दिक पांड्या का डिसमिसल, थर्ड एम्पायर ब्लंडर लुक इन रश टू गिव आउट, कॉमन सेंस नहीं यूज करे, बिल्कुल नहीं करे, यूज करे। बट ऑनेस्टली वो देखो भाई जो है हो गया, वो नसीब की बात है, लेकिन आउट हो गया था तो आउट हो गया ही था। आउट था नहीं था मेरे तो इतना गैप था मगर बॉल और स्टंप्स के बीच में, आउट कैसे दे दिया उन्हें? क्या आजकल भूल जाता है। एंड स्पीकिंग हैदराबाद में मैच था, यू सॉ देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ डिलेज इन गेटिंग द स्निकोमीटर एंड गेटिंग द बॉल ट्रैकिंग, इतना काफी टाइम लगा रहे थे। इवन इन द लास्ट जो डिसमिसल हुआ था, जो रिव्यू कर रहे थे फॉर द लास्ट विकेट फॉर ब्रेसवेल, कितना टाइम लगा यार उनको मगर भाई ये तो क्लियर गैप था बॉल और वो, आई डोंट नो हार्दिक को कैसे दे दिया. आई नो दैट यू डिसअपॉइंटेड विद द हार्दिक शॉट, यू एक्सपेक्टेड हिम टू एटलीस्ट प्ले इट, नॉट मिस इट लाइक दैट, बट ही वाज नॉट आउट ब्रो.
क्या ही बोल बट दैट इज द थिंग यार इवन में टेक्नोलॉजी इतना रख लेके भी ऐसे सिचुएशंस आ रहे तो क्या बोलना फिर उसको लाइट ही ले लेना थर्ड टीवी एम्पायर टू डायरेक्टर Collab with Sports Yari, sir. करेंगे सुधीर We भाई will करेंगे soon. वेरी We've done a couple already with Manoj Bhai and one with Rohit Bhai also in the past, and hopefully we'll do, of course, in the future as well. Sudhir Bhai, thank you for joining us. Vinesh Bhai is back in the house. Thank you for joining. Hello, Shami. In pressure situation, looks like club bowler. Yep, I agree with your wet ball, but Siraj was bowling Yorkers with accuracy, but Shami was bowling full tosses. But sorry to say, he disappointed. I agree with that. Look, at least his concept was right. He was trying to go for the Yorker, but someone with that much experience, he should be nailing those Yorkers. And I was very disappointed because I'm a huge Mohammad Shami fan. I felt that he lacked that that what do you call it that. क्या बोलते हैं भाई रिस्पांसिबिलिटी किलर इंस्टिंक्ट किलर आके खत्म करो भाई नहीं कर रहा उन्हें वो एक्यूरेसी नहीं थी फुल टॉस ना डाल दे रहा था एंड आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मोहम्मद शमी आई कंप्लीटली एग्री विनेश भाई इवन आई एम अ ह्यूज शमी फैन आई कंप्लीटली एग्री विद यू फॉर भाई के श्योर हाथ पे भैरी भी पड़ी लेफ्ट हैंड पे भैरी भी पड़ी उनकी बॉल से फटते बोल के लगा देगा लेफ्ट हैंड पे बट या आई बॉल मीन से जिस तरीके very का उनका पड़ी एक्सपीरियंस है एंड जिस तरीके का वो बॉलर है आई थिंक उनको you know given the fact that there was only probably one or two Yorkers in this match it's actually ironic that it didn't come from Shami. Yeah, and I've seen him nail Yorkers in the past, where he has a good Yorker on him, and he has the pace also. Have to get your eye in on this pitch. Yeah, you do, and also Don and Fez, Shubman Gill को दो तीन चांस मिले भी, like drop Hmm. हुआ था उन्हें cotton bolt ये वो तो अगर उन्हें जब out हो गया तो then he wouldn't have got to that double hundred. We wouldn't say it's a flat wicket. It could have been a 300 chase instead of 350. भाई सीनियर बॉलर को ज्यादा लेनी जिम्मेदारी चाहिए जिम्मेदारी लेना चाहिए थी मोहम्मद शमी एकदम एवरेज बॉलर दिखता था या आई एग्री लाइक आई कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट जिम्मेदारी तो तो बट लेना डू यू चाहिए थिंक आप लोग को लगता है कि शामी को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट मैच में बिकॉज आई थिंक बैक टू बैक हो गया ये शामी का जो सिचुएशन है मगर आप किस बेसिस पे आप उसको लाइक जस्ट बिकॉज़ ऑफ परफॉर्मेंस गोना ड्रॉप हिम और देन व्हाट डू यू डू विद परफॉर्मेंस शार्दुल व्हाट शार्दुल का क्या है वही बोलेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम इज कमिंग एंड प्लेइंग एंड वही बैटिंग का सिचुएशन देख के उसको खिला देंगे Look, until I think Shami को of course breaks तो देना चाहिए, but he has to be in and around the squad when Bumrah is not there, just because he has the experience. But of course, अगर उन्हें लगातार ऐसा पिटने वाला है, then you have to drop him. Simple as that. Like then उन्हें NTR in the house, global award-winning nacho nacho. So Fez, so Hyderabad is the only place where Virat Kohli is not the only king, huh? You have NTR there, you have या लॉट Ismail ऑफ पीपल Bhai there, you have क्या है Rana Raghupati is there. और बोलो भाई so Virat Kohli, this is the only city in India where Virat Kohli is not the only king, huh? Yeah, that's probably true because you have Ajubhai also there. Ajubhai is the king in Hyderabad. Ajubhai owns the HCA. Umran is needed on flat pitches of India. Umran Malik. Umran is needed, man. Umran is the wicket taker. Umran is the settler probably. मगर I भाई think वही उन्हें चीज है कि भाई I have no problem जब उन्हें नहीं खेलता because रेस्ट भी जरूरी नहीं है नहीं भाई नहीं खेलना है ठीक है नहीं 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 आई थिंक वो इन लोगों के हिसाब से जिस तरीके से देख रहे देखो ना ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलने वाला है कैसा भी ही इज नॉट प्लेइंग इन दैट टेस्ट मैचेस सो यू कैन प्ले हिम प्रॉब्ली द फर्स्ट एटलीस्ट फर्स्ट ओडीआई हैदराबाद में सनराइजर्स का है उन्हें सारा उस लॉजिक से भी खिला लिए तो नो बात प्रॉब्लम सही है बात बट सही है रेस्ट तो देना पड़ता भाई बॉस को इट्स ट्रू दैट ही नीड्स रेस्ट एंड आई जस्ट डिडंट नो ऐसा लगा नींद में से उठ के आके शार्दुल ठाकुर खेला लाइक लिटरली सुबह में उसको उठाए You think आओ भाई खेलो मैच को लाइक apart from the रात में bat व्हाट्सएप आता मामा व्हाट्सएप सुबह में मामा मैच आ जाओ बोल के ऐसा लगा आई ही डिडंट लुक रेडी लाइक मेंटली आल्सो ही डिडंट लुक इनटू द गेम मच you think not only because he can bat but also because they've expected the Hyderabad wicket to turn that's why they put Shardul there that उन्हें cutters cutters useful हो जाते उसको उसके ये pitch पे हो सकता है probably that would be one aspect but like उमरान मलिक फोड़ देता है स्पीड में I don't get it like this there's different types of bowlers but like उमरान का क्या है डर तो भी बैठाता हूँ यहाँ पे डर नहीं बिठा रहे थे कोई भी after like that fifth wicket going no one was scared everyone was just like हाँ भाई ठीक है चलने दो right? but Shami And this is was actually better sorry this is actually one thing that we've been also discussing कि भाई एक टाइम पे ऐसा आता कि अपन मैच डोमिनेट करते एंड देन यू आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस टुडे अगेन आल्सो फील्ड खामोश हो गई प्लेयर खामोश हो गए नथिंग वाज हैपनिंग दे वर जस्ट कमिंग बॉलिंग एंड गोइंग वो कॉन्फिडेंस का पैरामीटर किल होते गया एक हाँ भाई वी जस्ट हैव टू प्ले इट आउट टाइप सिचुएशन में आए जब तक फिर अपन ऑन द काउंटर खाते दिस इज व्हाट्स बीन हैपनिंग सिंस द लास्ट टू मैचेस एटलीस्ट द श्रीलंका T20 सेकंड वाला एंड एक बीच में जो श्रीलंका ऑलमोस्ट केम बैक वो वाला मैच भी एंड दिस हैज बीन हैपनिंग विद देम
Yeah, and that's what he's saying. Chirag Shami was better at the start and the middle. That Phillips wicket, मगर फिर end में हक दिए थे शार्दुल तो पूरा ही हगा है. And that's the thing, death overs में like someone like Shami, yeah, he bowled well in patches, but you expect him to finish off strong, right? And that's what you want from your senior bowlers, and that was not the case today. No, he's not happy. He was supporting I'm Mumbai very in the home, happy. and he said that I'm clearly not on supporting. the live. He forgot that there was a sunriser in this thing. He's like, "Amma ki बहुत strong team है, Rashid bhai." He didn't care about the फर्स्ट sunrisers game. मैच He था, was आई more सेड focused. फर्स्ट मैच में अगर आप देख रहे हो तो राशिद भाई खेल रहे हैं, I'm going to support राशिद भाई in that match. आज मार्को यानसन जो 66 मारा है भाई, next level. I think at one time we lost राशिद भाई quick की फिगर wickets. निकालो, जल्दी निकालो. क्या अगर आप मेमोराइज राशिद नहीं भाई की करे अभी तक तो जल्दी राशिद भाई की निकालो फिगर्स. figures is 1 for 53 and he got smacked by Hyderabad का so Sunrisers. And yeah, I'm very happy. अभी आज विनेश भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मैच है तो देखना है. That's a very important match for Manchester United as well. वो भी है एक चीज. हम अगर एनसी रीजन बी टीम से जीता है. बी टीम तो नहीं बोलूंगा मैं. This will actually decent squad. खाली एक केन अन्ना नहीं थे बीच में, के पत्थर है. अगर केन अन्ना रहते तो टिम maybe it would सऊदी have been a different thing. टीम साउदी उतना टिम नहीं मिस सऊदी करे. I don't think they ट्रेंट bowlers. Trent Bolt contract issues, so you don't even know कब मार्टिन निकाह के गप्टिल पेपर को साइन करेंगे. I don't want to be rude, but yeah, he also has a contract issue. रोहित Contract issue शर्मा है, but लैक्स like B team तो नहीं killing बोलूंगा मैं because the way they played, I think they played good in terms of batting and like they lost their weight in the field. That's all I think. Today they were I know very where he's sloppy coming as from, field. though. I understand where he's coming from. There's some key Yeah, players missing, and that's why. And also, this is worrying signs कि भाई आप at home खेल रहे हैं. And मैं यही बोला था श्रीलंका के बाद, don't like I'm not gonna read too much into it, man. Like when you're going to play against New Zealand, England, and thing, यहीं पे आपको problem पड़ेगा. मैं क्या बोला फैज तुम्हारे को मैं अभी बोले. 350, 340 दूसरे टीम्स भी मारेंगे Yeah, आपके खिलाफ. ये true. क्रिकेट बदल गया. तो शुभमन गिल आज बचा दिया, and maybe और Surya I Kumar's think innings, the strike, he didn't waste any deliveries. That could have been, if you look at it very deep, that could have been a game changer. Because अगर कोई केएल राहुल आके अगर उन्हें वो स्ट्राइक रेट पे खेला जो नेचुरली खेलता when he starts, maybe you would have got to 350. So that's the thing, you have to also play. one important wicket जो शामी लिया Glenn Phillips का, अगर Glenn Phillips would have got going, man, that would have also like खत्म हो जाता था. And that was Glenn a very Phillips for struggling in Hyderabad conditions today. worrying signs for IPL. But no, आ जाता भाई. The एक Rohit आध Sharma बिरयानी का lacks प्लेट killing लाना. in Rohit Sharma lacks killing instinct. His laid back attitude is now visible in team. नहीं यार, like अभी जिस तरीके से ना एटलीस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट इंटेंट बता रहा था, it was decent. तुम And I उसको won't say किस हिसाब से रेट जज कर रहे हैं एज अ कैप्टेंसी? व्हाट आर यू लुकिंग एट? बिकॉज एक देखो वर्ल्ड कप चले गया उसके हाथ से. अब तुम बोल रहे हैं कि उसके हाथ में नहीं था, आज बॉलर्स के हाथ में था, व्हिच आई आल्सो सेड, आई मेंशन दैट बिफोर यू केम. बट विराट कोहली को तो चढ़ जाते थे अगर ऐसा, जब उन्हें भाई इन्हें ही डजंट हैव द नर्व टू बी कैप्टन, एकदम से गुस्से में आ जाता है, डजंट हैव द पेशेंस, सबर नहीं है मेरे विराट को तो कोहली. वो सब चीजें नहीं देखता यार. एटीट्यूड अगर बंदे का है, वो टेम्परामेंट है, and if he is able to have a क्या good देखते relation. बोलो, हाँ, क्या देखते बोलो? किसका? अच्छा, रोहित शर्मा का अगर क्या है? एटीट्यूड नहीं देखे तो रोहित शर्मा का देखो, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ भाई, पहले तो ऑन ऑफ जा रहे बेचारे, उनको कभी इंजरी है. बट सिंस दिस न्यू ईयर, एटलीस्ट इट्स बीन अ हैप्पी न्यू ईयर अभी तक के भाई, कि रोहित शर्मा आप अगर देख लो, उन्होंने पूरा टेम्पलेट चेंज कर दिए. जो T20 में नहीं कैरी फॉरवर्ड करे, आई नो उनका कॉल था या व्हाटएवर, बट एटलीस्ट उन्होंने मिस्टेक्स पे वर्क करे. इतना तो आप बोल दो. लाइक द वे ही क्लिनिकली जो भी बोला, आप जीते अपन व्हाइट वॉश करे श्रीलंका, छोटा चीज होगा भाई. चलो, श्रीलंका आल्सो इज अ ग्रोइंग टीम, बट द इंटेंट ऑफ द प्लेयर्स हैव चेंज्ड. This it looks more like a pack, more unity in this team, and it's I don't all the agree. shot. Why I don't don't you agree. agree? क्यों नहीं Because लग रहा? if you remember before the T20 World Cup, ऐसी performances दे रहे थे, aggressive, ये वो आगे बढ़ के मार रहे थे. जब बड़ा टूर्नामेंट आया, फुस, and with team selection issues, field placement issues, under pressure getting rattled. He got rattled today, bro. Rohit Sharma. आप तुम जितना भी बोलो गालियां दे सकते, वो ठीक है, मैं तुम्हारे को अच्छा, अब दे सकते अगर हैं. आज का ले लो, अब रोहित शर्मा क्या कर सकता था आज? चलो, उन्हें बैटिंग बेटर कर सकता था. He did get a good enough start. 34 मारा, अनफॉर्चुनेट आउट हो गया. बट कैप्टेंसी वाइज आप मेरे को, हाँ, One, he कुलदीप को could खत्म कर have, second, maybe he could have got Siraj a bit earlier, Okay. and tried to put pressure that way. Third, wise, maybe take the sting out of the game. Thoda sa, at certain times talk to his bowlers. Thoda sa make the which he was batsman wait doing, for a which he field was hill doing out. in every time he was talking to the bowlers. उन्हें Every time हार्दिक सिराज को लाया eventually. देखो भाई, मैं एक्चुअली जिस तरीके से ब्रेसवेल खेल रहा था, कोई भी बॉलर जो बॉलर ना सेट थे, चलो मैं बोलो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनिंग्स में बॉलर ना कैसा डाल रहे थे,
पूरे लाइन इन लेंथ तमीज से ऐसा डिसिप्लिन शेव मार के आके ऐसा डाल रहे थे. द मिनट ब्रेसवेल एक आध दो छिक्के मारा, तत हो गए पूरे कई को. इवन योर सेट बॉल, इवन सिराज वेंट फॉर सिक्सेस, नॉट जस्ट के भाई इट वाज लाइक वन शार्दुल और वन दिस, एवरीवन गॉट हिट इन दैट की मोमेंटम जो उसको पिक करा उन्हें ब्रेसवेल को. सब पिटे भाई, कौन नहीं पिटा बोलो मेरे को, कौन नहीं मगर पिटा. यही तो है, अब ऐसा क्यों हो इसमें रहा अब है? इसमें आप कैप्टन कैप्टन क्या, व्हेन यू सी द जूम, जब उसके ऊपर कैमरा आया एट वन पॉइंट, रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा भी आया, तो उन्हें बोला, उन्हें उसका वही था कि अब मैं क्या करूं, जो मेरे पास है लोग मैं उनको यूज कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं. तो इन दैट यू कांट, योर बेस्ट बॉलर हैव टू शो अप ऑन दैट टाइम एंड टेक ऑफ. फ्रॉम अ कैप्टन But maybe perspective, because, but first, the certain things that what he did, maybe those led to these mistakes. Not bowling that leg spinner, not getting the wicket at the right time. If he the got Kuldeep, Kuldeep, I maybe will he would have agree. got the The wicket. Kuldeep, I will So agree. Kuldeep Singh, I that will is a agree. But the mistake. only thing, if there maybe was due there, pitne ke chances the Kuldeep ko, maybe he didn't want to risk it. के ज़्यादा slow रहा, easy on the bat. Bracewell इसमें मार दे रहा fast bowler उनको, तो उसको तो पहल देता था. But Kuldeep again is a smart bowler. He is bowling a faster ones better because of the change in his action or whatever. But that could have been a one off maybe, I would say. अगर अगर यूं होता तो फिर उसको बोलते थे तो कि भाई देखो, तू वैसा Kuldeep तो तुम फिर वैसा तो फिर दूसरे कैप्टन को क्रिटिसाइज नहीं करना, बिकॉज अगर आप इंग्लैंड इंडिया का सेमीफाइनल अगर देखे T20 में, उसमें रोहित की क्या गलती थी? बटलरों ने आके तो खाली ले बशीर सूद के रख दिया अर्शदीप, उन लोगों ने क्या करा? फिर आप किसी को भी नहीं क्रिटिसाइज करना, मगर देयर आर नहीं उस certain decisions that ना. he's made mistakes in this game, he's made mistakes in the past, which he has to learn, because bro, there's going to be much more pressure now in the World Cup. ये तो हैदराबाद में मैच था, it's a bilateral, it's okay, like इतना pressure नहीं रहेगा जितना World Cup में रहेगा. So over there he has to use his brain. Okay, fine, he doesn't want to keep his cool, don't keep your cool, but then make the right decisions, and you have to be on top of it. Especially I'm saying that it's not 100% his fault. मैं नहीं बोल रहा रोहित के वजह से लास्ट बॉल के गया, मगर उन्हें जिम्मेदार है इसमें, उसकी कैप्टनसी भी क्रिटिसाइज होना चाहिए, because he let it slip. Yes, he's part of that. Yes, the bowlers did it, of course. Shardul was a big major reason for this close game, and Bracewell his brilliance, but Rohit Sharma is also to be blamed for in terms of captaincy. He has to work on those decisions. 100%. In terms of decision, if you're looking at it, like that's something. अच्छा चलो, I understand the T20 World Cup at that time. His mentality was very weird. He didn't know what he was doing. He was lost. I'm going to agree with all of those points. कि भाई उन्हें खुद perform नहीं करा था. Team कैसा कि थच मच के आ गई. It was not a properly balanced side. I mean, we could have got like Umran Malik, but we didn't. We could have got 100 people better. नहीं हुआ maybe. But in this time, when I'm seeing from Sri Lanka, when he came back from his surgery or whatever, it looks like he's more intended and more aggressive than what he was a few months ago. ये तो आप भी I think agree करेंगे कि but he looks more to attack. He himself in a batting, he looks like he's in the swing of things. He's getting a good start, at least 60-70 आपका basic start है. 70-80-90 आप start दे रहे, उसके बाद I think शुभमन गिल को confidence दिया. He backed शुभमन गिल. He's backing KL Rahul, I know, but he's also going to back the youngsters as well. So these kind of changes that I'm seeing in him and his temperament in terms of getting the team to be more unified, that is what I'm appreciating. Yeah, T20 का World Cup, I'll give it to you. Okay, भाई उन्हें बेकार था, and I was also one criticizing his laid back attitude, but now I don't see that he's laid back in any aspect. Maybe today's match he could have got Kuldeep in, but I don't think it would have made a major difference given the conditions of the ground. I feel Klassen खेलेगा ahead of Phillips. Klassen full form में ऐसे T20 में. 50 पे 50 दे रहा, Sunrisers 50 पे 50 दे रहा साहिब भाई. He's giving 50 पे 50. Stubbs and started the smacking, and Marco also to Rash. Bro, Tristan Stubbs is worth it. One of them. I think he was the most expensive buy in the auction. He's an incredible talent. Zabardast in the IPL he plays for Mumbai Indians. We've seen glimpses of his performances, and this guy is the player to watch out for the future. But Marco Jansen today, I think Don is always saying, I wasn't sure if he should start for Sunrisers, but after this performance, it's difficult to drop him, because in batting bhi kar lenga, bowling bhi kar lenga, and he gives that balance. और क्या मारा. एंड भाई आर्चर, रबाडा, ये लोग थे ऑपोजिशन में. बहुत अनफेयर बॉलिंग अटैक है वो मुंबई की. राशिद खान भी है उसके ऊपर. नहीं बिल्कुल, लाइक इट शोज लाइक मार्को यानसन जिस तरीके से डेवलप करा अपने आप को. इवन इन द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच उन्हें खड़ के मार, लाइक खड़ा हुआ था बरानी के साथ, एंड ही आल्सो वाज गिविंग अ हैंड इन द बैटिंग डिपार्टमेंट अ लॉट. काफी उन्हें स्किल इंप्रूव करा अपनी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एटलीस्ट. बट वो ओवर नहीं भूल सकते हैं मुस्तफा में. कौन सा? सनराइजर्स का जो ओवर डाला था उन्हें.
वो पिटा तो मुंबई के अगेंस्ट, मैं नहीं बोल सकता नहीं हूँ। गुजरात के अगेंस्ट, सॉरी। हाँ, ये आपका वॉचिंग इतना कम क्यों है? इतना बढ़िया, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमेंट करें। हम लोग नए चैनल है इसलिए कोशिश कर रहे हैं बढ़ने के लिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वी रियली अप्रिशिएट। और जो भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं रोज, वी विल होपफुली ट्राई टू बिल्ड एज मच एज वी कैन। तो ये कुदरत का निज़ाम है, कम या ज्यादा हमारे हाथ में नहीं रहता, जितना भी कोशिश कर सकते हम करेंगे। बट तो लेट्स सी, मगर इंशाल्लाह लुक टू ग्रो टुगेदर। फैज भाई, इन लोगों को प्लेइंग 11 में लाया भी तो यही है। किन लोगों को? आई थिंक he's talking about रोहित शर्मा। Hats off to Bracewell, सैंटनर आउट होने के बाद भी he didn't lose momentum. That's a very very good point। डॉक्टर हम्म। फूडी पूरा एनालाइज कर रहे हैं, नाम ब्रिलियंट बदल पॉइंट। देना ना, डॉक्टर क्रिकेट बना देंगे क्या? बिकॉज सैंटनर के बाद और एक क्रिकेट गया, फिर उसके बाद फर्गी भी आउट हो गए, तो एंड तक उन्हें इवन विद द I लास्ट think he बैट्समैन just knew like I have to take या this till the end वरना कोई नहीं है, तो I think वो एक या एक एंड लास्ट ओवर में I think वो अगर यॉर्कर निकालता था at least he had the freedom of I have to just swing now for my life, तो वो एक dangerous part रहता है when a batsman has nothing to play for, like he has to play for the win but also like अब कुछ चारा ही नहीं है but मारो, so that gives him more confidence probably, but very good ball from Shardul। ऑल्सो कैन सुंदर बोल एनी वेरिएशन, एक ही बॉल फेंकते रहता। I think he has to develop a wrong one. That's one thing that definitely I would like to see from him. Also, variation pace. I would want him to vary his pace a bit more. He'll learn. He's a young player. He's played test matches for India now. He's played some big IPL games. He's played for India in one days and T20s. So he hopefully he will develop. I just want him to get a continuous run, because either he's injured or he gets dropped. And injury has also been a big issue with him. If he can keep fit and then develop his game a bit more, that will really help him. Variation in pace for sure, and some deliveries थोड़ा अलग उन्हें कर सकता। शमी को क्या हो गया है? I don't know, man. शमी Maybe he's getting on as well in terms of age. Also, just he wasn't executing like today. उसका intention सही था, Yorkers डालना है, मगर execution था ही नहीं। तो I think थोड़ा इंजरी के बाद इनका प्लेइंग गैप ही है। I know श्रीलंका में जस्ट खेला है, इतना भी गैप नहीं बोल सकते अब, बट वर्ल्ड कप भी खेला थोड़ा उन्हें, right? या बट उसके बाद 2 महीने इन्हें नहीं खेला है, आई थिंक उन्हें इसके हिसाब से इंजर्ड अगर नहीं था, वो कोविड हो गया था शायद बीच में, एंड उसको हम्म, पिक नहीं करे थे एशिया कप में। दैट सेड ही वाजंट इंजर्ड, ही वाज जस्ट वाजंट बट आई पिक्ड। थिंक जो he'll get तरी back and he'll surely bounce back। जो तरीके से उन्हें आउट हुआ was a little sad for him। लास्ट बॉल तक जा सकता था मैच, नहीं नहीं बहुत अच्छा था, टेंशन वैसे थी, एलबीडब्ल्यू हुआ गया, बट इट इज राइट कि भाई जिस तरीके से उन्हें ऐसा एक इनिंग्स खेला, अगर आप उस तरीके से आउट हो रहे एलबीडब्ल्यू पे एंड थोड़ा एटलीस्ट स्काई हाई कैच देते थे तो भी मजा आता था देखने में, और एंजाइटी बढ़ती थी पब्लिक की। Bracewell is 31 years old. 30 is the new 20s. हम लोग थैंक्स। we keep repeating this as we get close or touching the 30 mark. We keep repeating this, I'm that already 30s is 30, the so new I'm 20s. already 30, man। I'm I'm getting there very soon, bro. But yeah, so Joburg, but there is one match going on right now for people interested in the South African domestic league. Joburg Super Kings 122 all out. Mustafa, you want to listen to North's figures? 4 overs, 12 runs, 3 wickets. wow. But look, you're very interested in it. I just want to know about James the Neesham, strike rate of James Marco Neesham, Jansen. Marco James, Jansen James, strike rate. सुनो जी, James I don't Neesham, care. My team 3 already played. overs, 3 overs, हाँ, 7 बोलो। runs, 3 wickets. हाँ, Marco great, great. Jansen's strike rate is 244। ठीक है। तुम एंड में बोले वो जज, आप लोग देख लो लोग किसको सपोर्ट करते हैं और किस What is ऑर्डर the में saying? बोल रहे Save the best for last। That's what I did। हैं। एक फास्ट बॉलर और चाहिए नेक्स्ट में। भाई कितने, हार्दिक पांड्या भी है, इन्हें भी उमरान है, इन्हें उमरान भी है, उसका 4 उमरान फास्ट है, बॉलर थे। उमरान मलिक आ Oh, जाएगा, वेरी replace वो फास्ट replace of another वेरी। fast bowler. I thought he wants to play 5 fast bowlers. जो जब रोहित शर्मा आउट हुआ था, crowd was sad only for 1 second विराट फील्ड पे आने के, And और I excitement। heard I that on heard TV। that as well on I TV. heard that Yeah. on TV as well कि भाई एक तरीके से मेरा एक खुश कहीं क्यों हो रही है, मेरा अच्छा किंग आ रहा है ना, देखो वो आ गया बोल के शुरू हो गए थे, बट किंग को इन्होंने नजर लगा दिया और एक छाके आउट करा दी किंग को। मुस्तफा भाई, आप हैदराबाद से हो क्या? बोलो। मुस्तफा मेरा भाई मैं मुस्तफा ओरिजिनली भाई ईस्टर्न केप से है अभी। सनराइजर्स के बहुत बड़े फैन है, तो उन्होंने ईस्टर्न केप से। मैं बोलिए ओरिजिनली मुस्तफा भाई। हाँ, मैं ओरिजिनली हैदराबाद से हूँ, मगर मैं कभी रहा नहीं वहाँ पे, छुट्टियों के लिए हर साल जाता था। और अभी थोड़ा टाइम हो गया हैदराबाद जाके, लेकिन यस, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम देयर ओरिजिनली। तो आई एम हैदराबादी, तो घर पे हैदराबादी चलता।
लेकिन I was born and brought up in Jeddah, Saudi Arabia, in the Middle East, and I did my studies in Canada. So मैं थोड़ा originally my origin is Hyderabad, and my ancestors are from Gujarat. My क्या friend over here is Fazbi Hyderabad ke, but originally he was born and brought up in in born and brought up in Saudi and then Hyderabad, so it's like a mix of a lot of things. तो ये है हमारे रूट्स। शार्दुल, इतना बड़ा वाइड डालने के बाद अंपायर को क्यों 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 यार, that was क्यों weird. घुरा आज मतलब? बहुत ज्यादा हुआ, weird था वो। क्या गुस्से से देख रहा था, शायद अपना गुस्सा अंपायर पे निकालने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं बोल सकते। फ्रस्ट्रेशन। साई भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बहुत जुड़ते रहते हैं रिसेंटली हमारे साथ, तो आई एम थैंक यू सो मच। अंशुल भाई भी, आप भी। विराट को कुछ टाइम से लेफ्ट आर्म स्पिनर से दिक्कत होती है। देखो, लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी होती है, लेग स्पिनर से भी होती लेग है, बट स्पिन विराट कोहली विल he'll manage, man. I think he's a type of player की मैनेज कर ले सकता है। मगर हाँ, अगर आप he देखें did also आपकी, against Hasaranga, he did manage, he smacked Hasaranga. he did he did improve, तो but this is a good observation कि लेफ्ट हैंडर से है कभी कभी इशू। आई एम इंडियन बट आई सपोर्ट ओनली ऑपोजिशन बिकॉज ऑफ प्लेयर पॉलिटिक्स। I mean, So each to Sudhir their bhai own. really wanted, like, Sudhir bhai wanted Bracewell to win today, yeah. I think, but Shubman 200, bro, like, you support Look, I'm India, not so the I'm not like, I before I used to say you have to support your country, you have to say, but it's each to their own, man. Everybody has yeah, entitled to each to what your they own want to do. 100%, but like player politics से अपने को क्या करना है, अपन तो खाली supporter है ना। I think वो तरीके से कर, मतलब वो ठीक है, हर टीम बाजू में देखो, politics का। वैसा तो पाकिस्तान का क्या बोलना, फिर और मुन्ना तो politics में डूबे हुए, player से लेके country तक, like they have a कैप्टन decision, अपने सारे अपने प्लेयर खिलाते हैं, मतलब means that Rohit has his own favoritism, like big boss चल रहा है basically. नहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब विराट कोहली तो इज नॉट इज बेस्ट पैल, फॉर एग्जांपल, if I remember in the Sri Lanka series, it was between Shubman Gill and Ishan Kishan. I think he's closer to Ishan Kishan, but he played Shubman Gill ahead of him. But yeah, I understand player politics है, सरफराज को नहीं खिला रहे। देखो, ये तो सही है आपकी बात, सरफराज सरफराज का। को तो नहीं खिला रहे, बट उन्हें देखो मगर लगातार सुधीर सेंचुरी भाई, मारे। ये हर इंडियन कैप्टन के साथ रहेगा, हर मैनेजमेंट के साथ रहेगा, बिकॉज आपके पास इतने ऑप्शंस रहते हैं और इतना प्रेशर रहता है, गलतियां होंगी, ऐसा दिखता है नाइंसाफी चल रही, बट कुछ ना कुछ वजह होगा। आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई डोंट अग्री विद इट। आई थिंक सरफराज शुड बी देयर। मगर अगर आप देखें, विराट कोहली के कप्तानी के अंडर भी सूर्या कुमार के साथ यही हुआ था कि भाई उसको नहीं मिल रहा था चांस, व्हेन ही वाज नॉकिंग ऑन द डोर इन एवरी सिंगल मैच ही वाज प्लेइंग। सो that doesn't mean Virat Kohli doesn't want him in the team, or Rohit Sharma doesn't want someone in the team. It's just that there are certain things that they have to do. We don't agree with them, and we have our opinion. We have the right not to agree with certain decisions. I want Sarfaraz in the team, you want Sarfaraz in the team, we're entitled to that. is ऐसे player को drop नहीं करते जो ज्यादा famous हो, जैसा KL Rahul, I think he's saying. Thank you. Yes, that's actually a very good point. केएल राहुल फेमस है, बट केएल राहुल कभी निकाले भी नहीं, जिसकी वजह से अपने को मालूम भी नहीं उन्हें ये टीम में उसका स्थान कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर आप निकालो उसको, फिर हमें पता चलेगा भाई ये वर्दी है इतना जो आप रेगुलर खिलाए या नहीं। एंड इतनी होशियारी से जो उसको विकेट कीपर बनाए, उसका अल्टीमेट ट्रांसलेशन, अब ईशान किशन अगर नहीं फायर करा तो ऑब्वियसली दे ऑब्वियसली गो बैक टू केएल राहुल, बिकॉज अब तो कीपिंग भी करता है। अगर आप उसको शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली से तोलो तो वो कहाँ खड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं खड़ा हुआ रहेगा। बट अभी तो ईशान किशन एंड जितेश शर्मा और केएल भरत, ऐसे प्लेयर, केएल भरत को भी चांस देते कि नहीं देते वो देखना पड़ेगा। बट अगर नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड जीतती है तो थर्ड में तो फिर स्ट्रॉन्ग टीम खिलाएंगे। सो आई डोंट नो, ईशान किशन का ये मौका है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मौका है टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही कैन एक्चुअली बी अ permanent keeper in the 50 over format. First, you were talking about that Pretoria match, the John was Capitals. it the Capitals match. Shocking. उसमें Phil Salt थोड़ा देर right. Yeah. उन्हें Will Jacks again very impressive. Phil Salt is a bargain, bro, in the IPL. Who took in the Delhi Capitals took in? Yeah, In the IPL? Delhi Cap. Yeah. For 2 crore Delhi or something. Capitals. That guy is, and he wicket keeps as well, man. This guy's a bargain, bro. Phil Salt. Very good to see him perform like that. I last supported Indian team 2013. Then I saw Glenn Maxwell in India. Glenn Maxwell, bro, when he's on song, he's outstanding. मगर वही consistency का थोड़ा issue है. But and fitness का भी बहुत है, कहीं तो भी गिर जा रहा, नहीं कहीं तो भी unfit हो जा रहा. He's have a lot in recency, and I think IPL में भी काफी टाइम हो गया उसको फायर करते हुए देखे. मैं एक चीज बोलूं, ग्लेन मैक्सवेल, in India I haven't seen him perform in the IPL, but in Dubai I saw him perform. I wasn't at the stadium, but I remember मैं यूनिवर्सिटी में था. 2014 IPL में पंजाब के लिए क्या फोड़ा, यहाँ पे उसका एवरेज आई थिंक 100 है भाई IPL में, इन फॉर पंजाब किंग्स इन दुबई.
Dubai, yeah. 2014 IPL was it that one? Oof, क्या The one रख that के went दे to रहा था Dubai, yeah. मैच. Yeah, I think he smashed it there. Then they moved to India. Then nahi aaya performance, but Punjab still reached the finals in that year. Hmm. When he hit Ashwin for first ball, for six first ball in that Rohit 200 match in Bangalore. अरे हाँ वो भी जबरदस्त गेम था. I think कितना 350 को चेस कर रहे थे नहीं इंडिया उसमें. Yeah, Was it? three. I don't know. I'm not remember. 25 lakh population में न्यूजीलैंड टीम ऑलराउंडर है. इंडिया 1 बिलियन पॉपुलेशन में भी गुड ऑलराउंडर नहीं है. पॉइंट आपका बहुत अच्छा है. बहुत That's a जबरदस्त पॉइंट है. that मुस्तफा भाई का हर उसमें पॉइंट होता है ये चीज का कि और how are we ऐसा not नहीं, getting the middle order ऐसा क्यों है? You order. have to go and you have to question the coaching. You have to question grassroots level. You have to question domestic cricket. Maybe you have to question the Indian team management. Maybe there is, maybe we don't know. Whatever it is, they have to develop all rounders, bro. They have to. Otherwise, you're not going to be a consistent match winning team. You have to have consistent all rounders. But I mean Then that also, there's got to be something like you mentioned earlier कि भाई ग्रास रूट पे कुछ होगा जहाँ से शुरुआत होती क्रिकेट की वहां से कहीं को फिर इतना मतलब अब अगर आपको जरूरत है मिडफील्डरों की कहते हैं और मिडल ऑलराउंडरों की तो आप फिर आई थिंक जो भी कैंप्स है या एमसीए है या जो भी एकेडमीज है मुंबई एकेडमी या हैदराबाद एकेडमी या आप as a coach as a management visa you tell them भाई start producing all rounders and start telling children or like but the when they upcoming do produce all rounders, like for example, Venkatesh Iyer, Hmm. of course, like he didn't come from the grassroots. He was like, he had a job and he's like done his masters and everything. At the age of 26, he came, he took the IPL first round, played for India. They're developing him as a middle order, and he played well in his last few games. एकदम उसको गायब कर दिया. Vihari को they were developing him as a test kind of, a batsman who can bowl. उसको गायब कर दिए. So there have been players who have come and गायब भी कर दिया. So of course you have to question grassroots, but you also have to question question man. the Indian team management and the captain as well. That's a reflection of average Indian health, maybe. I don't know, man. Like I don't know if it's a reflection of that, but definitely there is Yeah, I mean, questions. probably. I mean, sustenance of the ability to bat and bowl. I mean, health का कितना ही बोल सकते हैं maybe. I don't know, but it's a good point in terms of diet and fitness. India के facilities उतने great नहीं है, honestly. बना सकते, room for a lot of development there, but नहीं करते. Abhishek Sharma is a good all-rounder, but he's from Punjab, not from Karnataka. But there are Punjabis, right? In the race, Shubman Gill. I mean, Arshdeep is not the greatest example right now because he's not playing in the one-day series, but he's been He's picked. a proven talent. He's a proven talent. So will not get chance because it's from. देखो politics तो रहेंगे. I don't know exactly. देखो भाई Politics हमें of सुधीर भाई हमला जैसे हैदराबाद के कितने प्लेयर आए आप ही देख लो like in Hyderabad like you have VVS Lakshman who came out. Who else is from Hyderabad, Mustafa? That I'm not able to Mohammad recollect. Azharuddin, Muhammad Azharuddin, Venugopal Rao, Manukopal Rao, Arshad Ayub, Mohammad uh, Siraj. Mohammad Siraj. That's it, like five in all of my life. और है I've seen. भाई अंबती रायडू. अंबाती रायडू अब वो 83 में जाके देखो उसमें भी एक निकलते कहीं से भी प्लेयर बट आई एम जस्ट सेइंग कि भाई हैदराबाद में भी टैलेंट काफी है बट 83 निकल में उन्हें कोच थे हैदराबादी कोच थे मान साहब. मतलब या हम्म. तो या 83 तो वर्ल्ड ये कप में तो and there's कपिल so देव many के जो कोच states, थे. so many cities competing with each other that I mean then you have Ranji Trophy that is actually going to अब उसमें से कैसा छांटते फिर विजय हजारे में से कैसा छांटते फिर मुश्ताक अली में से कैसा छांटते छांटने का प्रोसेस समझना है. Came out of the closet. तुम फिर से बोले you came out of the closet. I don't know. Came out of Hyderabad बोला मैं तो इस saying came out of the closet. Naughty guy Okay. आशीष भाई. But yeah. I agree. Why no Ravi Bishnoi boy? Ravi Bishnoi should be there. He in his last game was it Babar Azam को नचा दिया था. Ravi Bishnoi needs to be there, man. I don't know why he's not picked. It's a very good point. Ravi Bishnoi is not गायब कर दे रहे प्लेयरों को. वो वही तो बोल सकते हैं और क्या. हाले रे कुलदीप को शायद कितना असर मारना था, कितना कुलदीप भाई कितना परफॉर्मेंस उनको देना था to get a good run in the team. Man of the match मिलकर उनको ड्रॉप कर देते थे. तो yeah, you have to question selection. You have to question things. इतने अच्छा talent है आपके पास. You have to back them. One thing I would commend is the way they back Shubman Gill, because there are people in the chat, there are people around the world who said कि Shubman को क्यों इतने chances दे रहे, bring someone else in, give Gaikwad a chance, give Prithvi Shaw a chance. लेकिन Shubman Gill has been backed properly and he's showing the talent that he has. Unbelievable, man. उसके जो shots कड़क, wrist work जबरदस्त, timing बेहतरीन. So I've liked the way he's been backed. अरे नितिन भाई किधर है भाई, आपके इंतजार है, इतना टाइम हुआ आपसे
बात करके. Thank you so much for joining us and hope you're doing well. मुस्तफा भाई, पाकिस्तान के खिलाफ ये मिचेल मुरलीधरन ब्रेसवेल बन गया था और इंडिया के खिलाफ मिचेल मैथ्यू हेडन ब्रेसवेल बन गया है. बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही. आज मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, नितिन भाई, ब्रेसवेल एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है. अगर आप डोमेस्टिक सर्किट में देख लो एंड एवरीथिंग, ही बैट्स द टॉप ऑर्डर. अब नाउ फॉर न्यूजीलैंड ही बैट्स इन द लोअर ऑर्डर बिकॉज is focusing on his spin bowling and everything. But growing up, he's played top at the top of the order, so he's a proper batsman in that way. Like, and I know where you're coming from, where he bats in that in the middle order. You expect him not to score an innings like that, and you feel that India have led him to that. But he's a very good batsman in that sense. That's why I don't support this team. I am frustrated. And I understand, but the thing is, I'll just tell you one thing. When you support a team, whoever you support, like, you're going to get frustrated at times. You have to run with the flow. For example, I'm not saying only in India. Like, for example, Manchester United, I support them. There's the last 10 years, is the most frustrating team in the world for, like, along with Arsenal. But Arsenal's done Yeah, amazing now and this season. So once you pick a team, like, there's going to be, that's part of the joy, and that's yeah, part and of सुधीर भाई, supporting a आप team. मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही कुछ जा रहे, लोग आरसीबी को भी सपोर्ट करते हैं अभी तक, नहीं, पंजाब मैनचेस्टर किंग्स को भी यूनाइटेड सपोर्ट, इसलिए जा रहे बिकॉज हम सपोर्ट पंजाब करते हैं. बट पंजाब किंग्स को भी सपोर्ट करते हैं. हमारे पास थोड़े लोग आए हैं, तो मतलब हम ना सनराइजर्स फैन है, बट मैं बोल रहा हूँ ये बात कि भाई आरसीबी के फैंस को भी देख लो, हमारे पास तो इतना ट्रॉफी है. क्वालिटी है. हमारे पास ट्रॉफी है, बट पंजाब की टीम है ना, जो थोड़े लोग हैं हमारे चैट में पंजाब के, जो आशीष भाई आएंगे, देखो गन ब्लेसिंग आएगा भाई. बट या आई मीन यू हैव टू स्टिक विद योर टीम नो मैटर व्हाट. एंड हाँ भाई, सनराइजर्स, उन्हें अनिल कुंबले फ्रस्ट्रेट कर दिया आशीष को, बेचारा. लाइक, ही डजंट वांट टू गो आउट एनी मोर इन विंटर्स ब्रो बिकॉज ऑफ द वे पंजाब इज रन. तो यही तो है कि, लाइक, व्हेन यू सपोर्ट टीम, whoever you support, it doesn't matter if it's an amazing team or it's a backward team. Whoever you support, you have to back back to them. bloom, And back to and bloom, if and it's fine to get frustrated. It's fine to get angry with the नेचुरल. team and get upset. आप It's, इधर you आ can जाओ, vent इधर out. अपन फ्रस्ट्रेशन मिला के निकालेंगे, पूरे मिलेगा एवर्टन को देख फ्रस्ट्रेशन. लो अभी कैसा खेल रहे. उन्हें तो प्लेयर्स को रोक दे रहे हैं भाई ग्राउंड के बाहर. उसको रोक या दिए थे, मीना को रोक दिए थे नहीं परसों, और गोर्डन को भी शायद पार्किंग रोक लॉट दिया, में, किसी को. पार्किंग लॉट में हाँ, रुक दिए पार्किंग थे. में रोक दिए भाई. व्हाट आर यू डूइंग, ये वो बोल के रोक दिए थे. ही हैड टू कम आउट ऑफ हिज कार एंड लाइक से सॉरी एंड भाई ऑल मैं दैट. हूँ, भाई मैं हूँ. Yeah, so there are, that's the thing. Like, whether the team loses or wins, you have to back them. For example, that India versus Pakistan game. Yes, India got knocked out of the World Cup. They didn't play well. The India Pakistan game, as an Indian fan, we were very proud. We were very excited. So, that's what it is. Pakistani fans, you think they're not frustrated? They're so frustrated. But when they, when they won that game, when they beat New Zealand in the semifinals, they came to the final. They were very proud. They were very happy. So those moments only come if you stick to a team. That's what I feel. I mean, everybody is each to their own. That's true. Basketball culture अलग है. Basketball, they pick one player, जो भी वो player चाहता, they go and support them. For example, LeBron James, they'll support Miami first, then support Lakers. So it's different culture. So it depends on you. Football में थोड़ा कभी-कभी रहता वो, but not as much. भाई यहाँ पे और कमेंट्स ले लेंगे भाई. Now you will see आरसीबी, me regular, promise bhai. Thank you so much, and I hope you, Sudhir bhai, you bring your friends along with you. RCB players is shining in everywhere. Duplessis hit a half century, King from Siraj at peak. Will Jacks is also performing, but they need to perform as a unit in the yeah, I mean IPL. आरसीबी का आप देख लो, they've always had good players. I don't know Manish bhai, when they were last a bad team to on paper. I mean they had Maxwell, they had Virat Kohli, they had Siraj, they had कौन थे मुझे, और कितने, they had De Villiers, they had A.B. de Villiers and Chris Padikkal, they had Gale, Chris Gale, Shane Chris Gale Watson, का तो खैर वहाँ अपने का बंदा KL था, Rahul, KL Rahul, yeah. Shane They Watson, always had a Mitchell good team, Stark. RCB, man. They always had good team, and owners also always back their team, and they have the shortest ground in the whole of India, man. They could easily win it one at home. They have Chahal, they have so many people, man, but they Mitchell just don't Stark, win Anil because Kumble, I Zair think they're Khan, like Wasim Jaffer, Rahul Dravid, Jack Ellis, blacklist. Rudolph van der Merv. और क्या होना आप. बट अब ये जो भी साल की होना, बात, अगर अब जो ये भी साल की होना. बात कर रहे, हाँ वो हमारे पास है. बट अगर आप ये साल की बात करें, फिनालिन आ गया है इनका ने, पेसमैन आ गया इंग्लैंड का, उन्हें कौन है, मार्कवुड इज नॉट विद देम, मार्कवुड इज समवेयर एल्स. मार्कवुड नहीं, आरसीबी कौन था यार फास्ट बॉलर जाए अभी, तुम कंफ्यूज कर दे रहे हो मेरे को. सिराज के साथ अच्छा डालने वाला बोल के, I'll tell you when I remember it इंशाल्लाह. एंड आज बढ़िया. दो प्लेयर 23 के, एक ने 200 बनाया, एक ने 100 ट्रैक्टर और गिल. 100 ट्रैक्टर और गिल मतलब आज दो प्लेयर्स 23 के, एक ने 200 बनाया, एक ने 100
Tucker. I'm not sure. Nitin bhai, if you can rephrase that. Now you will Now see you see, me regular. thank you, Thank you sir. so much. Mm, you can take this comment. New Zealand plays as a team also. Philip, Daryl Mitchell आके bowling में भी contribute कर देते हैं. Bracewell, Santner bat से. That's why they are good in tournaments. Yeah, balance of squad and you know the availability of different kind of players gives you always that backing के भाई अगर इन्हें नहीं चला तो इन्हें है या इन्हें बैटिंग में नहीं चला तो इन्हें है. And honestly चिराग भाई I'll be very frank अगर केन अन्ना रहते थे ये टीम में ये टीम अलग I think केन अन्ना in Hyderabad is amazing. अगर उन्होंने रहते थे स्क्वाड में तो मे बी इनकी ये जो ब्रेसवेल का कंट्रीब्यूशन था वो भी जरूरत नहीं थी उन्हें दीवार के लिए खड़ जाता उन्हें बट या आई मीन यही है नहीं, ना दीवार व्हाट की जरूरत नहीं रहती 350 मुस्तफा पेस में, मुस्तफा 350 has been में। talking about मुस्तफा has been talking about the same thing कि भाई यहाँ मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर होना या someone who can contribute bowlers should bat and batsmen should bowl कोहली और रोहित शर्मा we can see in probably test cricket they should bowl something like that but yeah I mean ICC के टूर्नामेंट पे अपन ना कभी रिस्क नहीं लेते थोड़ा कन्वेंशनल टाइप ही अपन उधर आप लोगों के वर्ड्स याद आ रहे थे मेरे को, दैट वंस दे थिंक दे आर गोइंग विन इट इजी, थोड़ा लेट बैक yeah हो जाते बोल के। आई थिंक but फैज मेंशंस दैट I think Faz mentions that more than anyone. These player fan clubs will destroy Indian cricket. But that's gonna happen, man. Especially India, so many people and everything. You can't keep stopping what thing. And I understand ki, it gets toxic that start fighting Rohit Kohli. हमारे ही friend circles में रहते हैं ये चीज़ें, हम भी करते can't really stop that. But It's like I think more. so if you what in terms of what do you mean destroy Indian guy? I don't think it's a support. I think it's just talking about exhausting the players maybe and then the Ranji players not getting an ability to shine. I mean there are a lot of people who've come through IPL in the Indian cricket team, but I mean depends on what you mean when you say destroy in what terms. किस तरीके से आप बोलना चाह रहे? I'm not very sure. नो मतलब आप एक रोहित का फैन है, कोहली का फैन है, आर्ग्यूमेंट्स ये वो होते रहते, फिर फेवरेटिज्म बोलते हैं एंड दिस एंड दैट, फिर सोशल मीडिया पे आता वो, देन वो प्लेयर्स तक पहुंच सकता है, इट कैन बिकम टॉक्सिक, मे बी दैट्स व्हाट ही सेइंग। बहुत दिन के बाद रवि शास्त्री का Yeah. कमेंट्री सुना था भाई, रवि शास्त्री Yeah. आगे उन स्मैशिंग अपने एंड ओरिजिनल as soon as he came on like Mustafa this is the job he's meant to do like ये job है रवि शास्त्री का I don't think coach was ये एक बस इसकी commentary is like next level I think he knows how to get the whole Who who's your viewers favorite excited. three commentators of all time? I'll Harsha put you on. Bhogle Harsha Bhogle Ravi Shastri and Danny Morrison. I go Tony Gregg, number one is my favorite. Oh You can't beat him. Jeffrey Boycott नहीं नहीं, नासिर हुसैन अरे and बाप Ravi Shastri, man. Ravi Shastri, bang! मेरे को हर्षा भोगले like Hyderabad Harsha Bhogle Goes to the अच्छा boundary like a tracer bullet. what about Danny Harsha he was Bhogle, your favorite guy Danny was only one of your favorites no, he's entertaining, but in Nasir terms Hussain of is like someone. Nasir Hussain, I find him just like his flow is like amazing. Of course, he'll also make mistakes and whatever, but I just really like his flow. Well, remember when he called out Ravi Shastri on commentary during that India-England test? I enjoyed that. To have the guts to call out, an Indian different. commentator at that time was a bit unique, but he was making his point. I found that funny. But in general, he has a bit of comedy, but उन्हें जो flow में बात करता brilliant है. Tony Gregg was the most exciting man. The dancing and the oils and shah. मुस्तफा भाई, आज से 1 साल पहले मैंने ट्वीट किया था, वाह अच्छा ये था हमेशा बोलते हैं आज से पहले मैंने 1 साल ट्वीट किया भाई तुम्हारे ट्वीट्स आप स्क्रीनशॉट करके डालो जी निशम को बाहर करो और ब्रेसवेल को कंटिन्यू चांस दो, ये बंदा तगड़ा है। आपको याद है आयरलैंड वाली इनिंग, वहीं भी ऐसी जिताया था। Good point, man. and, If you did tweet like that, credit to you. and Nisham was been I very poor honestly didn't think like that. I don't mind Nisham, but yeah, sorry. Nisham has been very poor अपन T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं चला फिर उसके बाद इंडिया में भी नहीं चला बट अभी ये आज उन्हें अच्छा खेला एंड लाइक आई थिंक दो मैचों से अच्छा खेला सो मे बी इज ट्राइंग टू गेट बैक हिज फॉर्म बट देखते हैं आई मीन सबका टाइम आता है आशीष भाई आईपीएल की बात क्यों कर रहे हो, ओडीआई पर बात करो, फैज मत शुरू करो ये ना को करो यार ये मत करो भाई आईपीएल आप तो खाना आना के भी बात करना है, फुटबॉल के भी बात करेंगे। एंड आज क्या मैच हुआ जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए था एंड 6 मार के जिता दिया जिम्बाब्वे बिल्कुल जिम्बाब्वे आज जीत गया था भाई बट वो डीएलएस पे जीते भाई दैट्स दे वन ऑन रिकॉर्ड लूएस दे डिडंट विन लाइक आई मीन दे वन नहीं बट आई डिडंट सी दैट गेम, आई वांट टू सी हु हिट दैट 6। आई थिंक ये Clive क्लाइव Madande, he मदंडो hit that 6.
Bro, I did not. Bro, no, he hit it. I don't know if the Duckworth Lewis was after, because sometimes the Duckworth Lewis comes before, then you have that target. So I didn't Hmm. see the game, so I need to see the highlights on that. Sorry, bhai, Nitin bhai. Ryan Bird hit a good 59 of 41, and Sikandar Raza 43 of 45. Sikku is getting back in form, huh? Sikandar bhai. No, we have to definitely check the highlights. Thank you, Nitin bhai, for letting us know about this. Do you know Steve Smith has opened a milk company? I I mean, don't know, sir. मिल्क किसका है? मिल्क किस अच्छा अच्छा ठीक है. मिल्क मिल्क कंपनी. हाँ तो इट्स अ क्वेश्चन लाइक भैंस का है हाँ, इसका है उसका इट्स अ अब क्वेश्चन बस गिल क्वेश्चन है. 194 पे सिक्स मारा आउट का डर नहीं लगा आउट हो जाएगा टीम के लिए खेला ये भी है अंशुल भाई की टाइम उतना था नहीं उसके पास और तो 200 बनाने पार्टनर्स की भी भी रन चुल थी. आउट और 200 बनाने की पार्टनर्स चुल रन थी, आउट मैं होते मानने थे लगा नहीं, ही बट हैड टू चल आज के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं. आज के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं. RCB is like West Indies T20 teams individuals, but as a team, always underperform. What about that 2016? I want to get your thoughts on that 2016 because I felt that the RCB were the team to beat, man. In that tournament, they were playing at home. The finals. Virat Kohli was in the form of his life. कितने की centuries मार दिया था वो season में 6 7 8. डिविलियर्स था उन्हें भी गुजरात को जबरदस्त मारा था प्लेऑफ में क्रिस गेल Hmm. फोड़ रहा था. But then sudden David Warner and the boys came and things. I think they should have won that. And also the finals where they lost to Chennai. Even that one, Chris Gale and look क्या मार रहे थे वो tournament में. And they were winning Hmm. games convincingly. It's just that अच्छा, Harry Tactor from Ireland. Yeah, they had like a kita 200 and something partnership today. 212 run partnership between Harry Tactor and wow. Andy Balbirnie. उन्हें 121 मारा and 101 मारा. Yeah. आज सेंचुरियों का दिन था, I think. जिस तरह का that was the comment I think earlier जो बोल रहे थे कि यहाँ इन्हें 200 मारा, फिर Bracewell मारा, Tactor मारा, Andy Balbirnie मारा, सब मार दिया आज. Acha, he's talking about they're both two number 23s. Since I started supporting other team, I support whole team. Hi, how are you guys doing? Ibrahim bhai, thank you so much for joining us. अरे इब्राहिम भाई मैच को गए नहीं कि फिर वो फाइनली ट्यूसडे दैट ही वाज गोना गो टू नो. आज कल का मैच था आपका नहीं हाँ आया कौन क्या है सिचुएशन उसका. अरे कल अच्छा मैच था जो बर्ग और उन लोगों का एक हाथ से पकड़े नहीं पकड़े मतलब बॉल मतलब क्रिकेट बॉल तो एंड ये मुस्तफा बोला भाई क्या. मैंने गेल के लिए 2 साल पहले ट्वीट किया था ये बंदा नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा और 200 भी करेगा वही है. भाई तुम्हारा ट्विटर का पासवर्ड दो मेरे. देखना है ये सब. तुम्हारा ट्विटर का पासवर्ड भाई हर चीज बोल दे रहे आप तो. Well, this is a good shout, man. Mark Nicholas, amazing. I was actually reading his book a few months ago, or last year. I was reading his book. He captained Durham, I think, but he never played for England. But this guy's knowledge of cricket is great, and the fact that he hosts a lot of. He's the lead commentator, like मतलब वो host commentator रहता है and guest commentator like analysis वाला रहता है, right? He's normally the host, and the fact that he hasn't played international cricket representing England, but he's one of the top commentators in the world, brilliant. I remember that Ashes 2005 is the first place where I saw Mark Nicholas. Now he hosts a lot of. He does a lot of commentary in South Africa and does a lot of post-match analysis and stuff. He's world class as well, man. A very, very good commentator. I because of cricket game 07 game, but yeah, I agree, man. He's a very good commentator. Faiz bhai, आपको screenshot भेजूंगा Insta पक्का में. भेजो भाई Tomorrow, पक्का Messi भेजो. versus Ronaldo. Who is winning? Backing Ronaldo, but very tough. अरे रिमेम्बर वन ऑफ द ग्रेट कमेंटेटर्स रिची बेनो याद है. ओल्ड Yeah. लेवन बच्चा क्या जबरदस्त था मतलब रन अपन जो गेम खेलते थे क्रैशिल 97 पे The, पूरा टाइम बेचारे. I mean, it was like तो, it was a classic nostalgia of Tais Mara. कुछ भी नहीं. Don't read into it. no, But Ronaldo is gonna yeah, win. जुब्बा पहन के रोनाल्डो आने वाला है कल. bro, they're playing PSG, man. Bro, they're playing Ronaldo. So the game is in Riyadh. It's going to be crazy. One last time, Messi versus Ronaldo. Maybe one last time. Potentially one last time. It's going to be a great, great game. लेकिन थोड़ा सा उतना वो नहीं है, right, Fez, because it's not like a PSG versus Real Madrid or everything. Again, man, I wish I went to that game. The tickets got sold out in 3 hours. I wanted to go for the game. I was only an hour and a half flight away from that, but the tickets got sold out. It's going to be incredible atmosphere, man. Ronaldo versus Messi versus Neymar versus Mbappe versus my man. My favorite player is also playing, man. Salim Al-Dawsari. He's going to be playing there, so it's going to be a great game. He's the player to watch out for. Steve Smith has opened Oat Milk Goodness Company. Retirement We'll plans. check it out. Thank you for letting us know. I will check it out. Your team Sunrises back-to-back wins. What innings! Sunrises, No Orange one Army, can man. That's why I'm wearing compromise orange and and Fez is not. oh,
I'm wearing a black, so it's just a dark day in He Indian went for cricket. the game. Yeah, he did. He said no ball didn't come towards me, and they have increased the price. अरे भाई अब तो भाई next match you go to just practice man. कहीं भी भाग लेते जाके कुछ तो भी करो भाई. आकाश अरे चोपड़ा भाई कैसा लगता है कमेंट्री में? कैसा लगता है भाई फैस? मैं एक चीज बोलूं, मैं एक चीज समझ बोलूं, में नहीं आता भाई. अब मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा आकाश चोपड़ा का, राइट? व्हेन आई स्टार्टेड But लिसनिंग टू हिम, आई वाज फेड अप विद हिम. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? आई but बी he फेड अप has विद हिम. some मैं क्यों logic. Yeah. कमेंट्री कर रहा, मैं परेशान हो जाता था उसके साथ. बट ही actually, if you see, especially YouTube channels and stuff, he's become a role model for me. He's done voice classes. Hmm. And उन्हें सुबह शाम, I've seen in Dubai with my own eyes, he's the last person to leave the cricket ground. He does the work for the broadcaster, whether it's Star Sports or whatever. Then he does his own Instagram, YouTube, this and that, and then he comes out. He's actually a very hard worker. I'll be honest. He's not my Yeah. favorite commentator. I used to be very irritated. मैंने जब भी आता हूँ, बोला भाई इन्हें क्यों है बोल के. But the way he's progressed, I can listen to him now. Still not my favorite, Yeah. but he works really hard, man. Respect. That's I just mean, my अगर आप उतना मेहनत लगा रहे, वो होता भाई के थोड़े लोग need a little bit extra push, and if he's giving himself that, he's that's done yeah, proper come on. lessons, bro, and like he doesn't need to. He's already has a contract and everything, but नहीं, he's willing that's to something improve. that yeah, that's उसका something YouTube game check करो भाई, level game. I know people are not everyone will have their opinions. Not everyone is a fan of him. I'm personally not a fan of his commentary, but I'm a fan of his hard work and the way he's developed himself. How many only if he worked subscribers does that he have hard on YouTube? only if he worked that hard in India cricket. Up to like not everyone has that skill, right? Like at least he played for India. No, Like, no, I'm 100%. But at least, like, see, if he has the content and is willing to push, then we can like tell the Pakistani cricket team to look at Akash Chopra. They can what? also work. They can also work on their English with him. But I'm just saying, like, yeah, Not it's only commendable. English, But at that level, voice. He's done classes for voice and everything. Like पूरा like वो रहता, like course रहता. हमारे को भी करना पड़ता. Like if we want to go आगे जाके, like he's done. seriously, क्या तो भी Yeah, course है भाई ये. yeah. रियाज करना पड़ता like mouth Yeah. There's proper yeah, courses. processions and stuff like that. अच्छा ठीक है. Nasir commentary is just next level for me. His favorite line was 2017 final Pakistan cricket at Pakistan cricket at its best, 1 minute down, next minute up, but as Indian it was hurting. Yeah, man, that was a great moment. Also, Ian Smith is it New Zealand the barest of margins. That guy's very underrated commentator. Not just that moment. Ian Bishop will remember its name. Will remember his commentary. What about Sabina Michael Holding? Mikey. Give it to him. The man, the moment. Sabina. The man, ready, bro. आपके शो में मेरी भविष्यवाणी फिनाले आने वाला मैच में तगड़ी इनिंग खेलने वाला है T20 में बच के इनसे. भाई आप कुछ पत्थर वत्थर पे कुछ पढ़ के फूक रहे हैं क्या है भाई, लेकिन I'm holding that to you. अगर फिनाले परफॉर्म करा then we'll have to shout out Nitin Pasi. He said it today. 18th January 2023 2022 29 means 10:29 को हमारे पास जो टाइम हो रहा है 10:29 को ये बात करी है. बट लेट्स सी. आकाश चोपड़ा दुनिया के पहले क्रिकेटर है जिनका करियर संन्यास लेने के बाद शुरू हुआ है. बिल्कुल. आई मीन देखो लाइक मस्ती बोला, सबका फिट नहीं होता वो प्रोफाइल. आई मीन डेफिनेटली आकाश एटलीस्ट ही मेड इट टिल दैट लेवल. वो भी बड़ी बात है. वो जमाने में ग्रेट्स के साथ खेले, उन्होंने ऐसा नहीं है कि भाई छोटे मोटे क्रिकेटरों के साथ खेले. एंड जो कंपटीशन था वो आराम even to come and play a couple of matches is a very big deal. और मैं खुद के observations से बोल रहा हूँ. I've not spoken to him or anything like that, but I'm just saying from my observation what I've observed. And I'll tell you honestly, मैं तो नहीं था fan. Like मैं तो मजाक उड़ाता था कि भाई ऐसा क्या commentary है, बंद कर दो ये वो. मगर उन्हें जो improve करा और जो मेहनत मैं देखा उसकी, unbelievable. Like that's what I respect. Like he's a role model for people like us. Mustafa Akash Chopra helped Rajasthan Ranchi team win back-to-back Ranchi after retirement. That's also true. South Africa squad fire versus England ODI. Fez is searching that as we speak. Searching what? South Africa squad versus England one days. No, I'm not searching that. I was just involved in like कोई और कुछ आ गया था बीच में. But yeah, I didn't see it. I didn't see that squad. Did you happen to see it? No, I haven't seen that squad. I'm just looking at Phil Salt, 52 of 30, and they've won the game. Have the Pretoria Capitals. Yeah, काफी uncompetitive था बेचारों के लिए. Candy Fundisi. Mustafa bhai, I'm huge fan of African cricket, but African team में बहुत अच्छे player आने वाले हैं.
बिल्कुल हाँ, आने आने वाला है। वाले तो है भाई, और आ रहे हैं। अब डेवल ब्रेविस आने वाला है, ट्रिस्टन स्टब्स आ गया, उन्हें जबरदस्त प्लेयर है। Who else is there coming up? There's quite a few. मार्करम, Rabada is still there. Nokia is still there. Markram, I mean, he has talent, but he hasn't lived up to it. स्टब्स है, Uh, और कौन है? उन्हें उन्हें भी था यार, ड्वेन जो अभी रिटायर हुआ सर, ड्वेन प्रिटोरियस, प्रिटोरियस था। उन्हें भी प्रिटोरियस तो जबरदस्त था, खेल रहा अभी भी। टैलेंटेड। Someone, he didn't he retired recently from South Africa? I don't think so. I haven't heard anything. But yeah, just to add to that, England squad is basically for the upcoming ODI series is George Butler, captain Moin Ali, Jofra Archer, Harry Brook, Sam Curran, Ben Duckett, David Malan, Adil Rashid, Jason Roy, Phil Salt, Ollie Stone, Reece Topley, David Willey, and Chris Wokes. Wokes को भी call up आ गया। Bro, Joffre Archer back in the squad, man. Fire. Aag laga de fire. Bavuma still captain for this series. Bavuma, man. I'm kind of surprised though. I'll be very honest with you, because especially after losing to the Netherlands in the T20 World Cup, I'm sure there was criticism. Look, as a captain, he's done good jobs. He's done a good job at certain times in certain specific series. Lekin, that World Cup was disappointing, and his performance was also not there. Will you Hmm. cover Border Gavaskar Trophy? We will Yes. cover border and Gavaskar दोनों को. Everything that is gonna come, Sudhir bhai, we are trying to cover it. Hopefully we'll try to get more people on the show as we're going about it. But हर चीज जो uncover होने वाला है, हम cover करने वाले हैं. I like Jatin Sapru commentary, but not so much. I prefer English commentary. Jatin Sapru also great host, very fluent. I've also watched his YouTube channels. I met him. I was lucky. I had the honor to meet him in Sharjah, and I did compliment his work. But especially, the way he has control over both languages, Hindi and English. I respect that, man. That's great. It's not easy to have. What about Irfan Pathan's commentary? Bro, I haven't heard that much, because मैं English commentary Because सुनता इरफान हूँ, पठान, ज्यादा करता हूँ। सहवाग अल्लाह पूरे हिंदी में कमेंट्री करते हैं. आई थिंक इवन मोहम्मद कैफ भी करते हैं थोड़ा बहुत मैं कमेंट्री. सहवाग का एनालिसिस देखता हूँ क्रिक बस पे हिंदी में, which I like. It's a bit different, अपने but जमाने में सबसे बड़े हिंदी के तो उन्होंने थे, अरुण लाल used to come and everything, and yeah, few other. जो मेरा फेवरेट था back in the अरे 90s, नहीं, फैज हिट्स अरे फेज हिट्स अताउर वो रहमान, नहीं नहीं कौन थे नहीं वो? नहीं, मेरा ए- फेवरेट था ए- ठोको चीका चेतन ठोको शर्मा, क्या है उसका नाम? नहीं यार, वो अरे दिग्गज नहीं, सिद्धू इज फेवरेट ब्रो. सिद्धू इज लाइक उड़ती ठोको। हुई तकिया और रोहित का बल्ला, ये ऐसे शुरू आता था. सिद्धू He's like सिद्धू a लेजेंड है mango भाई. in the He is like he was crazy. the big fish in the middle. He is the best. When Pretorius has retired from international cricket, yeah, bro, that's what I'm saying. That's I'm going to watch it. Oh, Definitely the sorry. border Yeah, Gavaskar. border. The border. Where are you going to Delhi or are you going to? कहाँ से है आप सुधीर भाई पहले तो, and आप कौन से मैच? Are you going to the stadium या आप कैसा देखना, टीवी पे देखने वाला है? Let us know. अगर है तो फिर आप बोलिए टिकट्स कैसे मिल सकते हैं? We are curious to know that. Adil Rashid तो मार खा रहा है in the T20. Don't worry, in Hyderabad pitches are prepared for him. He's gonna come and smash it. But yes, मार खाया. मैं कल भी देख रहा Actually, था sorry, मैच, in the middle. 2-3 छक्के हाँ. पड़ गए थे उसको। साउथ अफ्रीका फैज की को तो स्क्वाड मालूम बोलते नहीं, तो फैज तो देखते नहीं सनराइजर्स को, फैज तो साउथ अफ्रीका स्क्वाड ये हो देख रहे नहीं। आदिल रशीद को देखे, साउथ जो छक्के अफ्रीका. पड़े उसको। नहीं, मैं बुरे चिल्ला नहीं देखता ना. आई कीप माय सेल्फ पॉजिटिव. बट नहीं, आई कम बैक टू द साउथ अफ्रीकन स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड सीरीज. अपने खाली इंग्लैंड को बोले, साउथ अफ्रीका का है टेम्बा बवूमा कैप्टन है स्टिल, शॉकिंग. क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासन, सिसांडा मगाला, केशव महाराज, जाने मन मलन, अरे एडन Yeah, मार्क्रम, डेविड मिलर, लुंगी he's had एनडीडी, some crazy innings. Andrik Nortje, Van Parnell, Kagiso Rabada, Tabriz Shamsi and Rassi van der Dusen. तो ये है साउथ अफ्रीका की स्क्वाड. काफी दिख रहा है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस तो हैं, बट या यू वर टॉकिंग अबाउट जानेमन. Yeah, he scored some crazy innings. मतलब crazy knocks है उसके, तो watch out for him, bro. जाने मन. इरफान पठान only says शबनम कौन है भाई? शबनम लाइक ड्यू फैक्टर. अच्छा हाँ, ड्यू. ओस ओस भी बोलते राइट उसको? क्या शबनम, शबाना. शबनम? मैं शबाना पढ़ा था, शबनम ओस भी बोलते राइट? देखो हमारी फैमिली देख रही है, शबाना को नहीं पूछेंगे. जॉर्ज लिंडन, फकीसो, कोबिन, बॉश, शबाना आदमी स्टब्स, हो सकती, नाम शबाना भी हो सकती. ब्राविस, फकीसो, मंगाला, डूमन, जैनसन, रायन, रिकल्टन एंड कोड्सली. आई थिंक आपको दिस साउथ इज अफ्रीका हिज. पोटेंशियल बता रहे हैं नितिन भाई. क्या बात है.
उन्हें फगीसो जो कल देखा मैं, उसकी बॉलिंग अच्छी तगड़ी बॉलिंग थी, उन्हें 3 छक्के के बाद भी आके he picked up the wicket, so it shows his mentality as well. Sidhu commentary in 2014 T20 World Cup was awesome. Sidhu, not a lot of people liked it, but I loved him, bro, because क्या poetry थी, Shakespeare याद आ गया मेरे को. I'm going to Ahmedabad for the, oh, amazing, man. That's a huge stadium. Is the biggest stadium, Fez, in Yeah, India, Ahmedabad. yeah, right now. Yeah. Yeah. Narendra Modi Stadium. Narendra Modi Stadium, the biggest capacity. So you're going to, hopefully it's a full crowd, Sudhir bhai, and you'll enjoy that. And hoping for a good game there. Australian commentary मस्त लगती है, जैसा बोलते हैं 6 या 4 पे. You know, the me back in the day जो उन लोग थे यार, फॉक्स क्रिकेट के क्या कमेंट्री टीम थी वो. कौन थे? Tony Gregg, टोनी ग्रेग भी था, मार्टिन टाइलर नहीं, कौन था वो? Michael Slater बोल रहे हैं. माइकल स्लेटर नहीं, क्या यार वो, टेलर ही था, मार्टिन टेलर एंडी ग्रे है. और मतलब फुटबॉल का कमेंट्री है. नहीं यार वो, people in the chat you can remind me that team. Ibrahim, I'm sure you can remind me. जानेमन मलान का एवरेज वनडे में 80 का था. उन्हें अभी लास्ट ईयर भी जबरदस्त इनिंग्स थे उसके. Are you coming to watch Border Gavaskar Trophy? If I don't, definitely will. Try. If I don't, Mustafa definitely will try. But no, either way we're trying. But like, अगर आपको टिकट्स का कुछ आइडिया है तो बोलिए प्लीज. अरे वो सब नको भाई, तुम तो फैज, तुम्हारे को टिकट की क्या जरूरत है भाई, इतने बड़ी आदमी, टिकट क्या जरूरत है. फैज छोड़ने नहीं चाहिए. If I can convince Faiz to leave Dubai, they will definitely come. No, but hopefully we'll plan it. We haven't made any plans yet. Yeah. We have to see the logistics and everything. We'll definitely try and see if we can cover that from India. That will be nice. If we can't, then we'll cover it from here. But we'll definitely cover it. But we will cover it. Okay. So I don't think South Africa consider him. He's more there to guide the youngsters. Thank you for that information. I did not know he was 39. I'm only going to see my favorite, Steve Smith. He is playing last test in India. And he's killing it, man. BBL में भी सेंचुरी मारा अभी उन्हें हर जगह. छोड़ दे रहा हो. फिर मार्नस लाबिशियन और उस्मान ख्वाजा भी T20 खेल रहे हैं ना, पूरे T20 खेल रहे हैं इंडिया ने से. No run. अच्छा ये बताओ, स्टीव स्मिथ या विराट कोहली, who's the better test batsman? It's a tough question. It's just your opinion you can give. मेरे लिए तो विराट कोहली, because I love विराट कोहली. That's it. As simple as that. But yeah, स्टीव स्मिथ यहाँ एवरेज वाइज अगर देख रहे हो तो स्टीव स्मिथ ही है. Would you say but both of them had phases. I think both of them had like peaks and then they dropped and then they had peaks. I think one place I haven't seen Steve Smith maybe hit a century, South Africa. I hope I'm wrong. Ibrahim bhai can tell me more about that. But apart from that, man, he's played every. So that 100 he scored in Pune. I know he got a few chances there, but on that turning track 100, matlab, incredible. Roy Hales की form ले गया. क्या बात है. And finally, so फैज आपके लिए comment. फैज भाई, अफ्रीका का T20 स्क्वाड का इंतजार. मेरे को तगड़े 3 प्लेयर्स आएंगे. मैं डिकॉक, 2 मरकरम, 3 राशि वैन ड्यूसन, 4 ब्रेविस, 5 स्टब्स, 6 लिंडर, 7 क्रिबन बॉश और मल्डर, 8th Jansen, 9th कहाँ गया? North Korea and 11 Korea Rabada. Man, नितिन पासी वाकई यार, अगर ये सब चीजें होने वाले भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ. But yeah, I'll definitely remember this. And also what you said about finale. What are your thoughts on it? So my thoughts are, I think it's a good approach because it's worked for England. Now it depends if it's going to work or not, but I don't think it's a bad approach because split captaincy. One thing about Boucher, I like him, bro. I like him as a coach and everything. I think he's done a decent job. But split captaincy, if I look at that concept, I don't mind it. I think coach, sorry, yeah, split coaching. I don't mind that split coaching. I like that. Whether it's going to work for South Africa, whether it suits them and just suits England, only time will tell. Like, it's something that because you can focus on white ball, red ball, different forms, and think. If you tell me it was this Brendan McCullum thing and the England the T20 one-day coach, these guys changed my mind. In the beginning, I didn't like split coaching, but these guys changed my mind. I think because the way cricket is going, there's so much cricket going on. There's going to be a time where you'll have one squad playing in one country and one squad in another country, the same country. That's probably what I feel, and it's happened with India. It's happened with India. So I think split coaching, instead of having Vivek Lakshman on certain assignments or like that, you split your white ball and red ball. I like it. Steve Smith any day.
नो डाउट स्टीव स्मिथ, बट फॉर मी विराट। मुस्तफा भाई बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, लाइक मुझको जिनकी इनिंग देखने में मजा आता है, विलियमसन मुझको पसंद है, वेरी गुड शाउट। स्टीव स्मिथ हैज 100 इन साउथ अफ्रीका, गेम ओवर मैन। फैज भाई, मुस्तफा भाई, हार्दिक लपाड़ा के बारे में दो शब्द हो जाएं। लपा लपेड़ा। गेट वेल सून 3 शब्द बोल दिया मैं, बट लाइक नहीं, आई मीन हार्दिक पांड्या इज गुड यार। ही हैज लपाड़ा, लपाड़ा, लपाड़ा क्या मतलब क्या है? लपाड़ा मतलब लपेड़, मतलब ऐसा लपाड़ा, लाइक लपड़ नॉट लाइक आई लपड़। थिंक हाँ, लपाड़े के बारे खुद में नहीं आप मालूम मेरे को बोल रहे हैं। स्लैप लाइक ट्वैप। हाँ तो ऐसा लाइक आई एम तो गेसिंग, आई बोलो, डोंट दो नो, दो बट दो शब्द बोलो, 2 शब्द तो बोलो उसके बारे में। इंजरी प्रोन। Steve Smith is not the most talented, but most focused. 100%, man. He changed his career from bowling to batting, like just on like focus ऑलराउंडर, and hard work. ऑलराउंडर। Steve Smith, Root and Virat, best test batsman. Virat Kohli has also had some incredible innings away from home. Oof, unbelievable. Even at home, he's been great. Now let's see what happens in the Bodo Gavaskar, Virat Kohli, Steve Smith. Probably one, not one final लास्ट टाइम, showdown. I'm hoping maybe one second last time. यू नेवर नो विद स्टीव स्मिथ एंड नील का नेचर कैसा है, कभी भी निकल जाते कहीं से। अभी तो उन्हें दूध की कंपनी डाल दिया, नहीं बोल सकते। आप ले सकते हैं कमेंट। फैज भाई, मुस्तफा भाई, जैसे परफॉर्मेंस है पांड्या की A1 डे में परफॉर्मेंस है, अगर वो इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में होता तो वो टीम में होते, बताओ, वुड ही बी इन अ टीम बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंसेस राइट नाउ? नहीं, मुश्किल है, बिकॉज इंग्लैंड में भाई अलग कंपटीशन है और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कंपटीशन है। इंडिया में वही है कि भाई लैक ऑफ ऑलराउंडर्स एंड एबिलिटी टू बैट एंड बॉल एट द सेम टाइम, आई थिंक वही है जो उसको रख रहा है। बट बट नो, टैलेंट मैं टैलेंट के 100%। वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, इंजरी मैं की भी वजह से टैलेंट की बोल वजह से रहा नहीं। हूँ। Talent wise, he could get into the No, team. Yeah, even he he's had. talking about Nitin Bhai is talking about in terms of even performances, he's not been given like injury. चलो ठीक है, but even performances अगर आप देख रहे हो Look, that's in also a that good shot. aspect. Performances wise, also, like he had a one good innings in that T20 World Cup, and that was in the semi final. Apart from the ball, with the ball, yeah, he was decent. You can say performances have not been the best all round performances, but decent. बोल सकते हैं उसको. Yeah, on skill, bro, he can make any team. Hardik Pandya. That's why I'm frustrated with him. But like performances, mentality, injury, these are things that he has to work on. Hopefully, Root Root versus Virat. versus या विराट मैन, मेरे को विराट बहुत पसंद है, विराट ही बोलूंगा मैं तो। रूट जो इज रूट गुड। अगेन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है उसको, राइट? आई मीन 50s तो मारता उन्हें ऑस्ट्रेलिया में, मगर 100, ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए। बट जो रूट पाकिस्तान में नहीं मैन मारा इज अभी कुछ। पाकिस्तान जो के ये रूट, विकेट में नहीं मारा, हाँ, अभी नहीं मारा, मतलब रिसेंट बोल रहा हूँ। वो हाँ, मैं कोहली पे नहीं मारा पाकिस्तान कोहली ने। भी नहीं मारा, बांग्लादेश में भी नहीं मारा तू। But yeah, I mean, there are a lot of things. नहीं, फॉर मी रूट वर्सेस थिंग, आई थिंक What विराट about कोहली। Babar Bhai, man? No one's talking about Babar Bhai in Test, man. He's killing it. Come on, Babar Azam. Let's be honest. भाई क्या ऑनेस्ट, But सेना में थोड़ा बहुत नहीं क्या है उसको। क्या क्या ऑनेस्ट, 5 लोग ठोक के आए सेंचुरी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के पाकिस्तान में। But पाकिस्तान 5 के कितने ठोके? पाकिस्तान के भी ठोके सेंचुरियां नहीं थे, साउथ गिल के सेंचुरी, सरफराज के भी थे, एक सरफराज के भी थे। हाँ सर्वा के 50 से एक सेंचुरी थी यार। भैया, भूल जा रहे हैं आप, सब ठोके सेंचुरी पाकिस्तान में, उसको यहाँ पे आके मारने तो फिर देखेंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट टेस्ट मैच क्रिकेट? What according to you is the मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट टेस्ट मैच फॉर मी? Test cricket? Test cricket. वनडे की बात कर रहा हूँ यार, रूट एंड वर्सेस विराट, वनडे में विराट तो भाई, विराट। फिर तो भाई नितिन भाई, that is not even like विराट ही है वो तो। Oh no, he's talking about Hardik Pandya and one day. Sorry. अच्छा। Uh, But anyway, it's like England more और or less a Australia similar की। kind of situation, हाँ right? भाई, कर सकते हो उसको, रख तो सकते। This is a difficult question, but मेरे हिसाब से because of his injuries and because of his big game, like not big game I वो would say, but like he hasn't given me those performances where they've won the like a World Cup or something like that. So I'm waiting for that, but based on talent, he gets. हार्दिक को अगर रख रहे हो, इंग्लैंड में कौन कौन है उस पोजीशन पे खेलने वाले? या लिविंगस्टोन या सैम करन तो नहीं, ऑप्शन नहीं, एक नीचे ले लो। ऊपर और कौन है अभी तो? आई थिंक बेन डकेट भी नीचे खेल रहा। यू हैव Ben Stokes. बेन स्टोक्स, यू हैव
Johnny Bairstow, if they don't open, he'll come down and play. But Ben You Stokes have was retired from one टेस्ट तो हाँ खेल सकता हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के लिए क्योंकि बेन स्टोक्स रिटायर्ड है. अगर विराट कोहली थोड़ा सा भी अच्छा बॉलिंग कर देता तो ही वुड हैव बीन द बेस्ट ऑलराउंडर मतलब देखो गंगुली थोड़ा बहुत ऑलराउंड करता था बॉलिंग अच्छा करता था विकेट टू विकेट. आई थिंक इफ विराट कोहली डिड दैट मच इट वुड हैव मेड इंडिया a better team. That's what I would say. I wouldn't say it would be the best all-rounder, but it would make India a better team. Because if you remember in that South Africa World Cup phase, Ganguly, some of the overs he used to bowl here and overs there. he used to bowl. Just that period, यूं even the आके क्या क्या NatWest करता था. T20. Yeah. Yeah. NatWest T20 में ऐसा आके like wicket to wicket used to it made India a better team. So I would think बट Virat मुस्तफा Kohli अब ये श्रेयस अय्यर भी इतना बोलते लोग डालता उन्हें अच्छा कंसिस्टेंटली डालता कहाँ फिर कहीं को नहीं डाल रहा श्रेयस अय्यर. है तो यही तो है क्यों नहीं डालते. Are they scared they're going to get injured? Are they not confident in their bowling ability? There's a lot of questions to be answered. I don't have the answer to it. Root has oh 1p. No hundreds in No Australia. 100 in Australia, so that's one thing. लानत है बाबर के टेस्ट रन्स पे टीम के किसी लायक नहीं. फैज भाई मुस्तफा भाई who's better गिल और बाबर एक शब्द का आंसर ये भाई ये आर्गुमेंट हो रहा था स्पोर्ट्स यारी पे वहां से उठा के मेरे को पूछ रहे हैं बिकॉज वहां पे जबरदस्त देख रहा था डिस्कशन में. तो आई वाज सीइंग देखो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं फिलहाल बहुत better and what are you talking about? Texting or what? मैं आंसर प्लीज कोई आर्गुमेंट नहीं बोल रहे हो तो मतलब एक आंसर बोल दो. फैज हु इज बेटर गिल और बाबर. I'm going to respect the experience and say Babar. I'm just going to respect the experience. That's it. Babar has a lot of experience. Like, we can't do that right now. You're correct. If you're going Gill, you can go. I know. Yeah, you have a counter to everything. Yeah. No, you're correct. I don't disagree with that. You're correct. Yeah. Okay, let's move and let's go on to the thing. Babar bed पर मार रहा है without clothes. फैज तो बोल रहे नहीं था वो बाबर. मुस्तफा भाई आप वर्क क्या करते हैं भाई आप मिलो मेरे से फिर मैं बोलता हूँ आपको. पहले मिलो आप सुधीर भाई. ये दुबई में बच्चियां दिख के काम करते हैं. No comments. Sometimes it's well by Cameron. भाई कैमरन ग्रीन ये बंदा बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है आने. भाई मैं भी मानता हूँ भाई पेन पेपर लो बहुत चीजा हो गया आज. मैं पेन पेपर ढूंढ के ला रहा हूँ. लास्ट मैच में अय्यर ने ओवर कराया ना. कराया बड़े कंसिस्टेंटली कराना चाहिए. बेटर एट व्हाट इज दैट ब्रो texting with an S. So yeah, I mean basically whatever Babar has been accused is talking about that. But no, Babar Azam यार ठीक है आप बोल लो selfish है कुछ भी है. He doesn't play, he has no match winning performance, but technique wise and batting ability भाई too much है उसकी. Yeah, look, Babar Azam recently the biggest problem with him has been that he has not scored runs under pressure. He's not won games like Virat Kohli has won and everything. But Shubman Gill has just started his career. No doubt he can be a bigger batsman than anyone right now. Like he has the potential, but only time will tell. We can only judge him after a few years. But Babar has played a longer period, so you have to respect the experience of Babar Azam there. So Umran is going to debut in Hyderabad only in orange colors. Go. That's the truth. That's facts, man. The man them ain't ready. Umran Malik 150 kilometers per hour. अगर अफ्रीकन की टीम साउथ अफ्रीका की टीम में स्टफ मार्करम हेंड्रिक्स फरेरा ये सब भाई फरेरा क्या प्लेयर है भैया. मैं उसको पहले मैच में देखा ऐसी T20 में. ओहो क्या इनिंग खेला उन्हें भी बहुत पोटेंशियल है फरेरा में. बॉलिंग भी जबरदस्त करा उन्होंने. सब बॉलिंग करते ये तो बात है भाई. इसलिए तो ये टीम्स तगड़े होते हैं बिकॉज बैटिंग बॉलिंग दोनों चलते रहते. सैम करन की फॉर्म की पंजाब दुआ कर रहे हैं नहीं तो फंस के पंजाब वाले. एंड आल्सो प्राइस टैग प्रेशर समटाइम्स जब इतना प्रेशर रहता थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था. आल्सो सैम करन won't have those big boundaries that he had in Australia to work with where he was getting wickets on the boundaries. That might be a factor. The wickets, certain wickets will suit him, certain might not. So I will be hoping to see how he does. But for me, he's been the most improved player T20s. So I think it's a very good signing. I just hope he does well. ये तो है भाई पंजाब में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आते हैं मगर एज अ टीम ऑलवेज थिंक उनके बेस्ट टीम थी लास्ट ऑक्शन में पंजाब की जो लास्ट ईयर का मेगा ऑक्शन था. फिर भी प्लेऑफ नहीं पहुंचे भाई. आपने देना चाह रहे थॉट्स नहीं कौन सा वाला है
अंशुल, we had Pujara as an opener. अब इससे ज्यादा क्या फंसेंगे? What are your thoughts on the championship belts? Oh, bro, I saw that in the LT20. They're trying to do something to attract the crowd. I liked it. I like the championship belts. I'm a huge fan of WWE. Fez is a bigger fan of UFC, but me, I love WWE, but now no one so watches it. I still watch with Can Ashish. Me and Ashish watch it, bro. We still watch it. I went to Royal Rumble like 2 years ago. And in India, it's still popular WWE, bro. yeah. Roman Reigns, man. Brock Lesnar. Charlotte But अभी Flair. विंस मैकमैन भेज दिया यार WWE में. अभी वो पक्की खबर नहीं है और विंस पक्की खबर मैकमैन है. वापस आ गया. छोड़ दिया था, राइट? ट्रिपल एच वाज द थिंग. विंस मैकमैन इज बैक. स्टेफनी हैज रिजाइंड. देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा गोइंग ऑन, मैन. साउथ अफ्रीका लीग में सबसे बेस्ट है फील्डिंग स्टैंडर्ड. क्या फील्डिंग हो रही है Yeah. वहाँ, बहुत काफी अच्छी जबरदस्त है. फील्डिंग हो रही है. एंड स्पेशली छोटे ग्राउंड से तो ये डाइव्स वाइव्स लास्ट मिनट हो रहे हैं. इट्स वेरी गुड फील्डिंग में, टॉप Which comes क्वालिटी. with the point that Sam Curran वहाँ पे भी perform कर रहा है. छोटे ground में भी उन्हें अच्छा consistent economy लेके चल रहा है. So I think he has really improved from the T20 World Cup. उसके बाद भी जो immediate series हुई थी वहाँ पे भी उसने I think एक ही मैच में पहले पिटा था वो. उसके बाद I don't see him losing his line and length. So yeah. Yeah, that's a good point. Royal Rumble next Sunday. Who's going to win, Faz bhai? I don't even know who is there right now, to be very honest. I'm going to just go on one leg and say Roman Reigns, if he's still there. It's going to be in your favorite city, bro. Dubai? No, San Antonio, Texas. Antonio. Oh, it's the Shawn Michaels, baby. Yeah. Shawn Michaels guy. You're a huge fan of thing, right? San Tim Antonio Duncan. Spurs or Tim Tim Duncan? Duncan. Oh, in it. Vince is back, no chance. एक बार सुशांत मेहता भाई को लाओ इंशाल्लाह जरूर भाई. हमारे बहुत ख्वाहिश है अगर उन्होंने आए तो मजा आएगा. रोहित भाई एक बार आए. मनोज भाई 2 बार आए. We want to get मनोज भाई को सुशांत तो भाई. ट्राई करेंगे लाने को जल्दी, hopefully, but yeah. एंड आप लोग भी जुड़ते रहिए. करेंगे उन लोग के साथ शो होपफुली. मुस्तफा भाई, मार्को यानसन ने क्या पहला आज राशिद को. My player versus Faz's player, bro. That's all I'm gonna say. He do भाई revenge है. I forgot. Excuse me. Yeah, it's राशिद नहीं 100% मारा true. था उसको. Revenge है. Yeah, पूरा अच्छा हुआ. जबरदस्त मार के. Yeah. That's my sunrise, bro. Orange. That's why I'm wearing orange. Yo, it's orange shirt and black track, so. I'm wearing orange all over, bro. I don't see all पहले over. पहले मतलब मतलब पहले means I will explain to you after the show. जॉन सीना कहाँ गायब हो गया. जॉन सीना की बीवी को देखे तो वहाँ गायब हो गया उन्हें. बट क्या बीवी है जॉन सीना की? हाँ, वो बहना थे ना दोनों. हो गया भाई मेरे साथ. बेला ट्विंस. मतलब भाई दुबई में गरीबी है क्या. हाँ, हम लोग है ना सुधीर भाई गरीब यहाँ पे दुबई में, तो ट्राई करते कहीं ना कहीं से कोई शेफ पाल ले हम लोग के, लेकिन अभी कोई मिला तो नहीं. बट होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट. भाई हर सारी दुनिया में गरीबी अमीरी हर जगह रहता. पहला अरे बहना थे जी. बढ़िया. फैज तुम कंटिन्यू करो, मैं जाऊँ खाना खाने. पर मेरे को यूनाइटेड का गेम देखा. तुम कंटिन्यू करो. क्वेश्चंस कमेंट्स लो सबके. छोड़ो नहीं, सोने नहीं मेरी जान. जब तक लोग नहीं निकले ये लाइव से. फैज तुम इधर ही रहो. क्या पनिशमेंट दे रहे मेरे को भाईजान. पनिशमेंट ही है भाई. हमारे इतने फैंस आके जुड़े हमारे साथ. तुम ऐसा बोल रहे क्या यार. नहीं, मेरे को यूनाइटेड का गेम देखना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ. तुम देखो करो यार. यूनाइटेड का गेम 12 बजे ब्रो. So like I came half an hour before you, so you have to stay half an hour after. I think there is a counter to that, but I'll give it to you after the show. Yeah, so final thoughts, Faz. But on BBL का भी एक मैच था, just for people who forgot. BBL का भी एक actually बहुत जबरदस्त मैच था. 78 for 6 थे at one time Hurricane Hobart, and they managed to reach 146. Somehow they were the dying embers में एक partnership आई Tom Andrews and Nathan Ellis की, which took them to 146. But yeah, वहाँ पे Aaron Hardy, जो मैं फिर बोला मुस्तफा निहाल अपने पास जो आते regularly, he mentioned about this guy. Aaron Hardy got a 90 of 67 balls. Wow. He smashed it completely, and totally took the game away from them. And Perth Scorchers beating Hurricane Hobart. But मेरा यही था कि भाई 78 पे 6 विकेट के बाद how you get to 146. Next level try from Hurricane Hobart. But yeah, that was the news from BBL for today.
या वेरी गुड मुझसे भाई हम कॉमन व्यूअर है, हम भी भाई देखते हैं स्पोर्ट्स यारी, रोज देखते स्पोर्ट्स यारी, पूरे चैनल्स देखते हैं। बट स्पोर्ट्स यारी दोस्त है राइट, रोहित भाई और मनोज भाई खासतौर में दोस्त अच्छे हैं, हमको सपोर्ट भी करते हैं और बातचीत होती रहती। तो एंड वी वॉच लाइक a lot of shows because you get different inputs from different opinions. You don't have to agree with everybody, but it's always good to watch different shows. And sports यारी also commendable the amount of work they put in. इतना हार्ड वर्क, लोग सुबह से शाम लाइव रहते हैं and they cover everything, so it's incredible. हम भी आए थे फुटबॉल करने, तो उन लोग फुटबॉल भी रात रात याद है फैज, लाइक 1-2 बजे रात में उन लोग कर रहे थे लाइव, so they नेक्स्ट do लेवल everything. डेडिकेशन कमिटमेंट है भाई भाइयों का वहाँ पे, नेक्स्ट लेवल। Your favorite WWE star of all time? My favorite is Undertaker and John Cena. I know Mustafa's 100% it's The Rock. There's no one else that Mustafa likes because on 100 रोज के रोज The वो एक Rock, promo book का The Rock. the Rock is my favorite, but Amen, brother. But Rock is my favorite. I also am a huge fan of Trish Stratus. yeah, but like he's talking She's from about like Toronto, represent, bro. Trish Stratus. 100% Stratisfaction, bro. She had crazy moves. Yes, crazy moves indeed. But yeah, I mean, I'm Are talking about male department. Man, it's The Rock, 100%. Who's your favorite? My Stone Yeah, Cold, Rock. man. Stone Cold. Stone Cold, very good shout, huh? I thought Triple H was your favorite. You always used to pick him in My the brother game. used to like Triple H. My Oh brother. yeah, I used to take. एक आता भाई पहले नीचे क्या बात पहले Cody Rhodes or The Rock will win Royal Rumble. Bhai, he's back, man. The Rock. That was he came to this last week Monday Night Raw. Oh, I thought that was a year ago, bro, or a couple years ago. Cody Rhodes, you know who Was Cody that? Rhodes was back in the day, Ibrahim Yeah, I bhai, he know was gold Cody. dust. He was gold dust. No, that was not Cody Rhodes, bro. Cody Rhodes या That's Cody maybe. Rhodes का भावा था, I think one of That's them. not Cody Rhodes, bro. Cody Justin Rhodes, young Rhodes. guy. No Yeah, man, Dust. Cody Rhodes was gold dust. No. करना था नहीं सारो. Wait. तो कुछ भी बोल देते हैं यारो. Bro, The Rock, if he comes back, that's it. We go live. We go live, a Royal Rumble. With The Rock comes back, man. Ibrahim bhai, The Rock should be back. Yes. Cody Rhodes and Dustin Rhodes, they both were gold dust at one time, but इसका नाम कुछ और था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है. Gold dust was like his brother, and Cody Rhodes was the brother of that gold dust. Manoj bhai is like a horse, never seen getting tired, man. Incredible stamina these guys have, and with the fluency they speak, I'm a huge fan. Stardust. And Stardust. Stardust was Goldust's tag team partner, and Cody Rhodes was Stardust. Oh, the kid. Yeah, the kid. वैसा बोलो. Favorite entry. I saw Trish live. Thanks, yeah, bro. You're so lucky, man. Trish Stratus in Toronto, we saw him. My favorite WWE था. जब Stone उसको स्टनर मारा था, Stone Cold Donald Trump को. Stone Cold Mike Tyson को भी मारा था स्टनर. But like when Donald Trump came, आपको याद है उन्हें $100 की बारिश कर रहा था. हाँ. Remember when Stone Cold got that truck with the thing, with the beer and just started spinning on DX? DX पे पूरा डाल दिया था नहीं? Stephanie McMahon लोग. Vince McMahon पे पेशाब भी कर दिया था उन्हें तो. Next level, man. Stone Cold. My favorite is Edge, but not when wrestling. Ooh, you like him? I think it's about Edge and Lita. No. There's also like what do you call it, Fez? In the mic, where there's a certain phrase they call it in WWE when they do the dialogues and everything. So people are fans of those as well. Like that's a big part of the storyline. Catchphrases. No, but that time where you're on the mic, basically. Goldust is Cody's brother. Yeah, I told you. Goldust is Dustin. Goldust is Dusty Rhodes. Yeah, I knew, but that he was not Cody. I knew it. You're wrong. But Cody was Stardust. Cody was Stardust. छोटा था राइट वो टाइम पे. नहीं यार, वो वही था, उसके बाद वो हुआ. The Rock को अभी नहीं आना चाहिए यार, एज बहुत है. एज क्या भाई, स्टेरॉइड्स पे और उन्हें जोआ का क्या एनर्जी ड्रिंक पी रहा, उन्हें कैसा भाई. रियलिस्टिक तो अब तो बहुत ही ज्यादा फेक कर दिया. रॉक को कोई मार सकता है, गेट तोड़ के आ जा रहा घर में, उसका 80 किलो का गेट उन्हें तोड़ दिया. पागल बात है. गोल्डबर्ग बेस्ट बीट ब्रॉक डरता है उससे. यार आई डोंट नो मैन. गोल्डबर्ग भी जिंदा है अभी तक. 50 साल अभी नहीं यार. Bro, The Rock is just next level. I'd bring him just for to talk, man. He's trash talk. His trash talk, his flow on the mic, his moves, the eyebrow raising, jabroni beating, pie eating. I just love him, man. He's the best. Ahmedabad test will be my first match as a viewer. Oh my god! Matlab, you have not seen a live match or a test match, or what are you saying? Oh, the crazy, man. Enjoy it, bro. Cricket.
is always amazing. It shouldn't be और your last. Please don't say it like for, that. yeah, People why are is it dying. your last? Yeah, please, हम yeah, लोग why मरते was भाई लाइव मैच देखने. आप इंटरनेशनल टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं. Please make the most of it and don't make it your last. yeah, hopefully not. Stardust was Cody. Yeah, Stardust, not Gold Dust. That's I'm what I'm telling you saying. that. Faiz said Gold Dust. तुम बाद में change करे. ठीक Lineup है is भाई. announced. Sorry Faiz, तुम continue करो. मैं जानूँ भाई. मुझे खाना लाए मैच But देखने what is आते. the lineup, bro? Like it's your team. It's our team. Bro, Let's. No, we have the team, and yeah, hopefully United beat Crystal Palace today. Very important game. Mustafa I just went there for a second and came back because he can stay without you guys. उन्होंने जितना भी बकबड़ कर लेते हैं, लेकिन at the end of the day उनको मालूम कि यहाँ boys है और यहाँ पे बातचीत है. फैज भाई 2009 के रॉयल रंबल देखा आपने, तब रैंडी ऑर्टन चिपड़ा था, लेकिन भाई नितिन भाई यूज्ड टू कम कहां से के नीचे से आके उन्हें वो आरकेओ मार के सुला देता था पूरा. bro, that is the craziest finisher in the world. It can be used anytime, any place, man. That's craziest. RKO. Next level. हर जगह आके करता था उन्हें. It's just a glorified stunner, man. Stunner में लात मारता है, इसमें नहीं लात मार के खाली उछल के आया था. So it's a copy. So it's more effective style. लात मारना उन्हें झुकना फिर करना है ना. क्या एकदम क्या से. करना, अच्छा झुकना, अच्छा ठीक है. हाँ. But yeah, I mean stunner is stunner. But let's see, hopefully. Our new boy debut, Weghorst, is going to start for United. Hopefully, we see the Dutch Dutch striker always has been good. Mustafa got one of his favorite players, Ruud van Nistelrooy. Mustafa loved him. Mustafa, what do you think about Weghorst? Weghorst क्या Oh, करने you वाला forgetting है? Van Persie also? He was outstanding. My favorite was Van Nistelrooy, Yeah. My as far favorite as I also. remember. Yeah, my favorite is Manestra is my favorite player from Man Yeah, United. even Memphis Depay was there. Van Persie was there. No, A but lot of people. Van Persie, I would say had probably it's tough because Van Nistelrooy also won the league. It's tough, but they both had huge impact. Weghorst, I don't think he'll have that big of an impact, but he'll definitely have some sort of impact. I hope. But he did have an impact in that Argentina game. 2 goals Yeah. within like a couple of minutes. भाई क्या मैच था यार वो तो. I remember आप हमारे मुस्तफा भाई was with the gang on sports यार, and he went crazy उधर. उन्होंने पागल हो गए एकदम. उनको समझ में नहीं आया क्या रिएक्शन देना, and I think live पे भी उन्होंने crazy हो गए थे. But yeah, World Cup तो भाई next level था. But people who don't follow club football, I would recommend कि भाई आप क्लब फुटबॉल भी देखो, बहुत मजा आता सपोर्ट करने के लिए. ऐसे ही क्रिकेट के से पागलपना रहता. ओके, क्रिकेटर्स कितना भी अच्छा करे इंटरनेशनल में, आईपीएल में परफॉर्म करने पर ही नाम बनेगा. Probably, I mean that's a good shot because I think वो प्लेटफॉर्म पे आप इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ साथ में खेल रहे हैं. I think that is also one reason maybe Yeah, that but adds to like the you thing. should But also reward Ranji trophies, which they're not doing that much consistently. You should, I think. बिल्कुल यू शुड. एंड आई थिंक वही है कि अब जिस तरीके से रिसेंट जो अपडेट्स आए हैं बीसीसीआई की तरफ से, अपन देख सकते हैं कि दे हैव टोटली मेंशन कि भाई, एंड आप देख लो जडेजा भी रांची को जाके खेल रहा वहाँ पे, तो रांची की थोड़ी आई थिंक दिस टाइम व्हेन द न्यू डिसीजंस वर टेकन एंड द रेजोल्यूशंस वर मेड, दे हैव रियली एडेड रांची इन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंडियन क्रिकेट. होपफुली इन द गिवन कमिंग टाइम वी सी अ लॉट ऑफ पीपल focusing on Ranchi cricket and Vijay Hazare and Mustaq Ali, and not just trying to make it to the IPL and sort of coming out from there. Question miss. No, we did this. Question Cody miss. Rhodes and oh, okay. Favorite WrestleMania match. My favorite was oh my उधर उन्हें I'm sorry बोल के मार देता है. I remember this Undertaker versus Triple H. But yeah, वो मैच बहुत लंबा था भाई. कितना लंबा था वो टेकर का मैच. उन्हें बात करेगी उड़े यार चिच्चा बात करी उन्हें मार के पागल हो गया मेरे था. को No, याद I नहीं आ think रहा that मेरा फेवरेट. WrestleMania का favorite I think अगर मैं देखा हूँ WrestleMania, Brock versus The Rock was in WrestleMania or SummerSlam. I don't remember. Bro, I don't remember. I think SummerSlam. I think it was SummerSlam if I'm not wrong. Only But for yeah. Steve Smith. Mustafa, you look like Kane. Which one, bro? Harry Kane or the Kane the wrestler? Mustafa bhai might be like Harry Kane because he always strikes. I hope when he he's quiet. means Harry Kane, but I know he doesn't. This is the last test in India, so He's my done. last match. What? This is the last. Oh, his last. Oh, No, Steve man. Smith. It doesn't. देखो, players will come and go. You have to keep watching, man. Cricket में कुछ भी हो सकता है. That passion, emotion, keep it going. Trust me. There will be more players to come in the सुधीर future. भाई अपन जो एरा से आ रहे हैं, मैं मुस्तफा आई थिंक मुस्तफा एग्री भाई. एट दिस पॉइंट अगर हम देख रहे हैं, ओनली विराट कोहली would have been the only what
We had Sachin Yeah, Tendulkar, we but had Faiz, Rahul I'll tell you Dravid, something in that. What about my dad, your dad? They watched Michael Holding. They saw Marshall, Gary Sobers. Marshall. These guys, like they haven't seen bowling like that. Shoaib Akhtar, Wasim Akram were quick, but those guys were different, right? So, and they've seen Sunil Gavaskar. So each era will have stars, bro. Like now, this generation, we can't tell them, ki, oh, bro, you missed out everything. We Waqar saw and the best Wasim. generation. Yeah. Every generation has this thing. Like for example, Virat Kohli. People will remember that Pakistani people who are 12 years old, 13 years old, they'll never forget that. They can tell their kids, guys, yeah, we saw, we're lucky to see Sachin, we're lucky to see the Desert Storm, we're lucky to see Wasim Akram, Shoaib Akhtar, definitely. But each era has great players, man, for sure. एंड दैट इज व्हाट अब देखो वही बात हो जाती है कि भाई अपन जब स्कूल यूजुअली छोड़ते हमारे टाइम पे स्कूल अच्छा था हमारे टाइम पे कॉलेज अच्छा था अभी से भी कल अपना एरा एक रहता है एक स्कूल में एक अपना अपन समझदार स्कूल खराब हो गया बट इट इज के भाई यू हैव टू यू नो आगे का भी लाइक आगे के भी प्लेयर्स है यू हैव सर्टेन प्लेयर लाइक उमरान मलिक इज वन सिराज इज वन देयर आर सो मेनी प्लेयर्स Yeah. अपकमिंग इन इंडियन क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया यू हैव लाइक मार्नस लाबुशेन है you have Travis Head, you have so many players that you can look forward to. England, तो भाई they revolutionized cricket from what time my father was seeing and Mustafa's dad was seeing to my time and Mustafa's time. So England completely changed the whole rhythm. So you will now मैं ये बोलता स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है आप नहीं छोड़ना बिकॉज भाई जिंदगी में इतने कम शौक है ये एक ऐसी शौक है जो यू नो आप जिंदगी पर लेके चलो एंड इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग आई नो इट्स अननेसेसरी स्ट्रेस समटाइम्स आपको लगता है कि भाई कहीं को सपोर्ट करो मैं कहीं को करूं बट थिंक मैं इसका ओके जवाब नहीं दे सकता बिकॉज ओके मैं कपिल खाली पाजी इनिंग्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे रणवीर से सिंह का हो इनिंग देखा गया कपिल पाजी का मैं नहीं देखा बिकॉज मैं जिंदा नहीं था वो टाइम पे और उसका वो भी स्ट्राइक था वो टाइम पे तो देयर वाज नो लाइव टेलीकास्ट एंड आई डोंट थिंक देयर इज हाइलाइट्स पैकेज इज देयर आई हैव नॉट आई सीन डोंट इट I just know so I yeah have there only was a BBC highlight in my strike head radio where strike. he's running after like the match is finished. He's running. That's all that I've So seen. Faiz, at that time, only the people at the ground saw that game because there was a BBC strike at that time, so it wasn't televised that match. So, So yeah, I cannot say like it's difficult. Like you tell me innings like that I've seen, then I can compare. अपने रणवीर की मूवी नहीं देखी मैं वही बोल रहा हूँ रणवीर सिंह को देखा कपिल पाशी को नहीं देखा मैं but I think रणवीर की तो ये आप कंपेयर कर सकते हो ये सवाल आप सबके लिए है रणवीर सिंह की इनिंग या आमिर खान की इनिंग कौन सी बेटर थी ये आप बोलते I think Amir Khan getting ज़्यादा because they didn't know how to play cricket. They didn't know how to play cricket. Sorry, who? Amir Khan, yeah. Mustafa Yeah, Steve Smith is Mustafa also Shis. a favorite of my crush. Who's your crush? The one whose favorite is Steve. So I think you need to start opening a dude dairy. Yeah, dairy farm खोल दो आप भी सुधीर भाई. But who's his crush? That he will not reveal obviously here because if Ben his crush Stokes. was Jalal, then he will be crushed. So yeah. Ben Stokes Uh, headingly test innings versus Virat Kohli Pakistan innings best कौन सी थी? Test innings. Rishabh Pant versus Ben Stokes would be much more applicable here. Yeah, if you compare formats maybe. I don't think I cross formats. I think we should look at one format per thing. But I would say yeah, Mustafa Rishabh Pant or Ben Stokes. This tough, bro. I don't know, man. तुम्हारे favorite है दोनों भी innings. It's tough, bro. I don't know. I really don't know. You could say Pant because it was away from home. Ben Stokes was at home. बहुत टफ है भाई बढ़िया इजाजत ले सकते नहीं ले सकते बोलो यानी मेरी जान नहीं बिल्कुल इजाजत लीजिए आप और मैं होपफुली अगर मैं भी ले सकता हूँ तो मैं भी ले लूंगा नहीं इजाजत तुम तो क्योंकि जुड़े रहो आधा घंटा एक घंटा कोई बात नहीं नहीं कल भी जुड़ सकते भाई कहाँ जा रहे हैं अपन we're not going to let सुधीर भाई और वाला आते सुधीर जा भाई रहे बिल्कुल आप continue watching cricket आगे जाके क्या okay सवाल है भाई okay one pick and why Ronaldo विराट सीना SRK Bill Gates Tom Cruise one pick for what Rista and why Ronaldo could you just rephrase that Nitin Pasi I'm not able to get it who's your favorite start out of पर them bro Faiz one pick अच्छा and why he's saying I don't know why he's saying why Ronaldo why like give you reasoning okay वाह अच्छा समझ रहे तुम but okay that's a very good question I would say for me Mustafa probably knows who I'm going to take out of this thing Cristiano Ronaldo yes for me Cristiano Ronaldo in terms of mentality in terms of where he came from what he did and who he did it against I'm not taking away from anyone of this जितने भी आप लोग नहीं I don't know Bill Gates and Tom Cruise I don't really know about their life but Shah Rukh Khan
Even John Cena has a very good story. And Virat Kohli follows Cristiano Ronaldo to a certain extent in terms of mindset. But for me, Cristiano Ronaldo, that mindset and that desire and determination to like, even at this age, man, he's just killing it. So, forever for me, 100%. Good answer. Kusal Pereira versus South Africa, that was a great innings as well. देखा जब टॉम लेथम स्ट्राइक पे था, ईशान किशन ग्लव से बॉल निकाला देखा था Yeah, very, सतारे yeah. थे उसको डॉट पुटिंग सी. So yeah, Faiz's favorite is Ronaldo. I think with that it's a good Not note to end on. note to end on. Sure, if you want, should I give my opinion also very quickly? I think for You me, wanted Tom your Cruise, man, the way he did that, वो बुर्ज खलीफा Burj क्या Khalifa. क्लाइम करा था, और मिशन इम्पॉसिबल में अम्मा, वो जबरदस्त, वो सीन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा. Incredible, man. What a scene that was, man. That was an Tom incredible Cruise. scene. What else do you know about Tom Cruise? Like, what's his life struggles and like, how did he come into Hollywood? Bro, I just know that scene, man. जब बुर्ज खलीफा में जब घुसा, Yeah, मैं no, that रोज was वो बुर्ज खलीफा commendable देख रहा stuff. हूँ, मैं वही कहाँ सोचता हूँ से जब करा भी यार, बुर्ज समझ खलीफा. में नहीं आया. Definitely. हम लोग तकरीबन रोज देखते हैं, राइट? जब भी देखते हैं, मेरा तकरीबन. सवाल में वही आता है, भाई उन्हें कौन सा फ्लोर पे कैसा घुसा कैसा नहीं घुसा. आई एम 20 and still not ये भाई आप 24. लड़ाई लगा देने वाले हैं अभी. मुस्तफा का नेक्स्ट सवाल मुस्तफा के लिए है. Who is megastar SRK और सलमान अंकल? सलमान भाई, भाई ये सबसे सबके शान सबकी सबके. जान भाई. Yeah, भाई I'll tell जान. you something. For me, Salman Khan is my favorite actor, but Shah Rukh Khan, I really appreciate, especially his business sense, bro. Incredible. The way he's invested, like in cricket teams, the way he's done a lot of these things, I really respect, and I'm very excited to see Pathan. I don't know how भाई it's going to भाई be. के But बाद बीइंग ह्यूमन ने भाई ने चैरिटी करा था. भाई क्या मतलब भाई चढ़ा देते yeah, सब पे. look, Sark has more worldwide. So for me and my family, we always fight it. Like the girls in my But family are I'll all give Shah you Rukh one Khan thing. fans, and the I'll guys are give you one Salman thing. Khan fans. I'll give you one counter to that. He has worldwide reach, but who does he always come for marketing to? भाईजान के पास उन्होंने आते ही Yeah, चाहते because he knows भाईजान की रीच क्या है. but And Faiz, देखो भाई in the recent times भी आप देख लो शाहरुख खान की मार्केटेबिलिटी थोड़ी नीचे चली गई. भाई के साथ सब मूवी करना चाह रहे, भाई के साथ सब बिग बॉस पे आना चाह रहे, उन्होंने खुद बिग बॉस पे आते. आई नो प्लेटफॉर्म है नहीं, सब है मगर मगर ये भी बट देखो, आप लाइक शाहरुख खान को भी आप देखो. अब there was so I met a British film producer, like he was producing a film in Saudi, right? He was a co-producer. I met him just a few weeks ago, and he told me he attended the film festival, the Red Sea Film Festival. And you know what this guy told me? This guy has met actors in England and like Hollywood and everything. He said, for the first time I saw Shah Rukh Khan, I didn't know much of him. I don't watch as much Bollywood, but I saw him. He gave a speech in that thing, and he said I think that I've never when he got seen his any doctorate. actor. No, now Jeddah में speech दिया था Red Sea अच्छा Film जिद्दा Festival में. में. अच्छा ओके So ओके. he said that the speech that he gave, I've never seen anybody with that much confidence. I've seen Hollywood actors, I've seen like a lot of actors around the world, but the aura that he had and fluency in speaking, and he just had this like the star Aura. thing about him, Yeah. right? It Yeah, was yeah. just outstanding. So like a thing was भाईजान, मैं एक बार मिला भाईजान से, अस्सलाम वालेकुम बोला मैं. No, I think wisdom Inspired and थे वो. knowledge बहुत ज्यादा है. शाहरुख खान पढ़ा लिखा है, दिल्ली का है भाई. 10th या 12th तक करके बस हो गया बोले थे. But yeah, Shahrukh Khan has all of that in him. He's educated, he has a good business mind and stuff. Definitely I'll give that to him. But like Salman Khan, I think he just relates more to the road wali public. No, the opinion है Faiz, like you know, some people will love No, Shah Rukh मैं Khan, भी some वही people बोल will रहा हूँ. Salman Khan. So ये it's कमेंट right. They're both right. ये कमेंट एक मिनट ये कमेंट. Sunny Leon or Sunny Deol? Both. He likes them both. So he likes 2.5 kilo का हाथ and I don't know what other 2.5 kilo he likes. अक्षय कुमार my favorite. अरे भाई अक्षय पाजी थोड़े कंट्री है यार. अक्षय पाजी का टेम्परामेंट थोड़ा गरम है यार. उन्होंने कपिल शर्मा पे भी आके जरा रोब जमाते पूरा. I don't like that. But he's a hard worker. I think he's a hard worker. 8-9 movies at one time, and yeah, he's definitely an all-rounder, 100%. भाई क्या सवाल Comedy. Okay, Dilip Kumar, SRK or नहीं भाई पुष्पा. I hate tears, but yeah, in our era it's Shah Rukh Khan. But Shah Rukh Khan used to look up to Dilip Kumar. So there's a lot Yes, of I saw Sharon Stone's reaction. It was she was वही जितना में था an वही वाले speech में, yeah, उसमें she was starstruck. So that he has is incredible. And bro, like yeah, he's educated, like man. He's next level. yeah, he's thing. But for me, Salman भाई his wisdom is like he has certain लोग अपने Instagram पे भी उसके कट करके काफी जो उसके lines है, they, you know, as motivational quotes and stuff. He has all of that in him. That's one thing. Like Shah Rukh Khan, obviously worldwide icon and stuff. उसको तुर्की में भी जानते हैं. अपने कितने बार taxi driver बोलते हैं Shah Rukh Khan. अरे Bollywood. Back in the day also people used to say Shah Rukh Khan. But like Salman Khan just, you know, he clicks with the very local people. Like जो
Indian hustlers है type. I think that is the only thing. कि road से भी बन के star man. Shah Rukh Khan obviously had to work his way up, but he did get like crazy breaks. Salman Khan didn't get that. Salman Khan started like from Wanted. If I have to be very honest, that's where he started, and he gave a lot of back-to-back 200, 300, 400 crore pati thing. Yeah, crore movie. So yeah. He's a very eloquent, impactful speaker. जेब में उतार लेता है यार, मैं जबरदस्त बात करता हूँ मैं. I wish I had his speaking skills. Big Indian cricketer Sachin Senior, or is that Sachin SRK or Dhoni? Sachin Senior, I think. Sachin sir. Yeah, Sachin sir or Dhoni. Big Indian cricketer. सबका ओपिनियन है, बड़ा इसमें क्या तो पूरा डिबेट हो जाता, बहुत वो हो जाता. आप मुस्तफा भाई को लोकल रोड साइड You're giving good night, bro. मुस्तफा भाई को लोकल रोड साइड बोल रहे. मुस्तफा भाई को लोकल साइड आप बोले, मैंने बोला. मैं तो खाली बोला पब्लिक. हम है रोड साइड. सलवा सेमी हसी सेमीफाइनल वर्सेस विराट पाकिस्तान. Oh my god, that's now Pakistan. Virat Pakistan. I know he hit 3 6s, but I would say Virat Pakistan, given that situation in the Australian cricket ground, like in MCG, it's next level atmosphere, and yeah. Mike Hussey semi-final. But the one he like faced, man, the bowlers, the quality of bowlers that Virat Ajmal. faced. Ajmal fake throw, but no, Ajmal was good. Yeah. मुश्किल आंसर है. You guys are giving me a good Sachin or Dhoni. For me personally, if you ask me very personally, I'll ask Dhoni because he captained India to glory on multiple occasions. Same. So let's wrap it up. 2 hours 15 minutes. Thank you everybody. Yeah. We really enjoyed your company today, and because of you guys हम लोग stretch कर रही है, and we're really happy, and बहुत मजा आया बात करके. Even we got our mind off cricket, talked about wrestling, Bollywood, everything. बहुत मजा आया. Now our batteries are dying and the football is starting, so we will head to that. And कल फिर आपके सवाल के जवाब देंगे, और so जुड़िए हमारे साथ कल, परसों और रोज. Thank you so much, guys, for your contribution, and I will catch you tomorrow, hopefully. Everyone have a good night, stay safe, and enjoy the rest of your day.